Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you for joining in this after tea session on medical education and leadership. Two of the very newer, relatively newer topics in medical education, pertaining more to soft skills. लेकिन जी जिस पैराडाइम में हम बात करने लगे हैं वो बाकी पैराडाइम से मुख्तलिफ है. यहाँ पे वेरियस आइडियाज हैं. कुछ आइडियाज अप्लाई हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते. जो हो सकते हैं वो क्यों हो सकते हैं इस पे बात होगी, और जो नहीं हो सकते वो क्यों नहीं हो सकते इस पे बात होगी. लेकिन दी आइडियाज do not have to come from the minds of people. They have to be evidence based. तो किसी भी आइडिया को आप अप्लाई करने लगे हैं तो we'll try to see the evidence behind it. We have a very interesting panel of speakers today. So without wasting much more time, I'd like to invite our first speaker. He is Dr. Imran Mirza, who has come all the way from UAE, and he'll be talking about essential skills in teaching and learning in medicine. Dr. Imran. Thank you. Assalamu alaikum. And thank you for the organizers to inviting me to present on this topic. I don't know how to advance the slides. Okay, there. Thank you. Right. Got it. Sure. Thank you. Thank you. So I have no relevant conflicts of interest to disclose here. The learning objectives of this presentation are to establish the importance of lifelong learning in medicine. We will also emphasize the significance of learning skills for lifelong learning and teaching, and we'll reflect and commit to professional growth in the field of medicine. So the premise of this talk is that the audience in this room, that we all want to be a better versions of ourselves as students and teachers. Do we agree on that? Right? Okay, so maybe we don't. Okay. So let's start with the first part of the talk. And this is a learning journey from cradle to grave. Peter Drucker, who is a well-renowned organizational psychologist, said that knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes, right? So why lifelong learning? The first thing is that there is a half-life of knowledge. Just like the milk in your fridge will expire, or the medicine has an expiration date, the knowledge that you're receiving today has an expiration date. And so things become outdated very predictably, and there is an exponential growth in knowledge as we know it. And the law of increasing learning states that professionals en masse, all of us across the world, are increasing how much time they put toward learning. So in days past, people did not spend that much time in acquiring knowledge as they do today. And we'll see some examples of that. So let's start with the half-life of knowledge. This is medical literature on liver disease. And so studies over time, especially if you look at 45 years, half of what was known 45 years ago is obsolete or false today. And this was a study done by two hepatologists from Australia, and it's visually shown here. Take some other examples. The periodic table, in 1970, there were 106 elements. There are 118 today. So over the past 50 years, the decay rate of that knowledge is about 10%. If you look at number of species, in 2017, 85 new plants and animal species were discovered. So scientists estimate that 90% of the species have yet to be discovered. So we only know 0.00001% of all microbial species on the planet. If you look at psychology, the replication crisis in that particular field is that 50% of the studies do not replicate. And those are the top 100 studies in psychology. So one thing that we all need to realize that the truth has a spectrum, and there's a pace of change for that knowledge. There are slow changing or constant facts. So for example, number of continents on planet Earth, or Greek geometry,
or books written by Allama Iqbal, although his posthumous poetry keeps coming up on WhatsApp, which which is amusing. And then there are fast changing facts, facts that are true today, but they are different tomorrow, such as weather, stock market, or petrol prices in Pakistan. Yeah. And then there are certain facts that are called mesofacts. They are transient and they have an expiration time, such as treatment of disease, classification of diseases, right? And their treatment, knowledge about nutrition. So if you look here, the cover of Time magazine, and this is about 20 years apart, cholesterol, and it was bad, but now butter is good. So these are the facts that are constantly changing. So why we need to then spend some time to learn every day? And I'm just calculating here that we need to at least spend 1 hour to learn every day for the rest of our lives just to stay relevant. So let's assume that you took 5,000 hours to master your field. So a medical school in the US is about 4 years, and then you can calculate the number of days that any medical student goes to school and number of hours they're studying. So assuming it takes 10 years for half of the facts in a given field to be proven wrong or improved, that is after 10 years, 50% of the facts in that field will be outdated, then you would need to spend that much time, which is calculated on the right side, just to stay relevant. And finally, the other point to be made is that people are learning more. So here are this, if you ever want to get more data about our world, this is the website, Our World in Data. And you can see that people are learning more and more, and some of the countries, United States, Switzerland, Canada, United Kingdom are listed up there. Pakistan is all, I also put in Pakistan just to show you where we are. In terms of average years of schooling. So in Pakistan, it's about 6 years, average years of schooling, 6 years, whereas most developed countries are way beyond high school. So one of the business theories, as you guys said, the ability to learn faster than the competitors is the only sustainable competitive advantage. So the point that I'm trying to emphasize here is that knowledge has a shelf life, and we need to be constant learners for the rest of our lives. So then how do we develop personal mastery? How do we develop a mindset that helps us on that path? So that is called, Carol Dweck, who's one of the psychologists at University of California, she coined the term of a growth mindset. And that requires that we need to be on a learning journey. We need to learn more we need to learn so as to be more confident and resilient. We need to learn to enrich our lives. We need to learn to be better able to cope with change. And learning preserves our well-being as we age. It keeps those neurons going. So, but the first thing we need to do is to learn how to learn. I think if I look back at my own medical college experience, I was born and raised in Kuwait. I did my high school in Urdu medium. Certainly, I was here in Pakistan. My family moved here because I was admitted in. My father thought that munda vada hoke doctor banega. So I was here. तो जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, and I will switch between languages, sorry. So जब मैं यहाँ मेरा दाखला हुआ, तो मुझे ये इतनी भारी भारी Gray's Anatomy और Harrison और ये जो किताबें थी, they were very challenging for me. First professional में, I just barely passed physiology. मुझे अभी तक याद है कि मैं जब वो unofficial results announce होते थे, तो मैं जब प्रोफेसर साहब के कमरे में गया तो उन्होंने कहा कि आपके 400 में से 200 नंबर हैं और मुबारक हो कि आप पास हो गए, या शुक्र करें आप पास हो गए. तो that was a time, and then of course it took me there was a learning curve for me to learn how to learn medicine and how to learn in English because I came from an Urdu background. So I feel that many of us go through those challenges, and nobody at that time, it may be different now, would teach us how to learn
all this. A lot of learning was through repetition, you know, usko bar bar pad ke, notes likh ke, highlight karke, and so on and so forth. And these are proven technologies. You can learn through repetition, but you can also learn by, you know, by other modalities, such as intervariation. You can do blocking and so on and so forth. And I'll touch on those. But you have to have first the aspiration, desire to understand and master new skills, self-awareness, seeing oneself clearly, curiosity, constantly think and ask good questions. मुझे अभी तक याद है कि डॉक्टर नसीमुल्लाह साहब अपना जब लेक्चर खत्म करते थे, he was our professor of medicine, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो वो आखिर में कहते थे, any intelligent question जी? And would you suspect that anybody would ask a question? No, because you would question yourself whether you know the question is intelligent or not. But I'll touch upon, you know, why questioning is an essential skill for learning. Vulnerability, tolerating one's own mistakes while moving up the learning curve. So you have to have a supportive self-talk. That's part of your open mindset. We all will make mistakes. We have made mistakes. We will make mistakes. But it is, you know, the concept of falling forward. Like, how quickly do you learn from it, and how quickly do you change? So there's unsupportive self-talk. I don't need to learn this, or I'm already fine at this, or this is boring, or I'm terrible at this. And then there is a supportive self-talk, like, what would my future look like if I did learn this? Or do I really know this? How do I compare with my peers? I wonder how others find it interesting. Like, for example, psychiatry was always a challenge for me, but I was curious, like, what's there? I'm making beginners mistakes, but I'll get better, and we all get better over time as you know, it's a practice of medicine. You keep on practicing. So for those of us who have passed through medical school and now working, we need to take control of our learning at work. So you, first of all, make sure that you pick the right organization, that you work for an organization that values learning. You have to make time for learning. It is, you know, you have to own your learning. And if you want, if you're waiting to be told that aapko ye aana chahiye aur wo aana chahiye, then you're not being proactive. You should take courage to start as a novice and expand your range of strengths. And you should learn from others, from your peers, colleagues, bosses, mentors, which is adaptive learning. Einstein was said that I have no special talents. I'm only passionately curious. And I think that curiosity of a cat will serve you very well, will serve all of us very well as we continue to learn. So the S curve of learning is that we start with an experience, and then as we engage with the material, you know, our learning goes up, and then we sort of get to a level of mastery through practice and repetition and so on. But we need to learn how to move from one learning curve to the next. We are always novices for something else, right? So you have to find ways to accelerate your learning, start developing new life skills in advance of when you think that you're plateauing at one skill. So for example, right now, I'm learning artificial intelligence, how to use, you know, ChatGPT, Site, and other tools in my work, and so on. And it takes courage to jump from one curve to the next. So if you're staying in your comfort zone and thinking that you know this, you know, it's fine, but greatness doesn't happen if you escape from it. And for the teachers and for the students, one thing that is important is that when you're learning, you need to support the learner. So if we generally think that this is how, you know, things are learned, I keep teaching you and you keep getting better, but in reality, it's a slope, a downward slope after a period of time. Most of you, once you step out of this room after this lecture, probably would not remember most of it. You know, lecturing is not a very good way of imparting knowledge. It's about 10%. Unless you write down your notes, or I quiz you immediately after this, right? Or you have your own reflections, very little of this will retain in memory. But if it is repeated or supported, yes, then you can have an upward going curve. So in the art of
learning, we have to unfreeze the mental maps. And what do I mean by that? So the first thing is that keep in mind that there is an explicit knowledge that we carry and we share with each other, but there underneath there is tacit knowledge, unspoken knowledge that we carry within ourselves. These are our mental models of the world we inhabit, of our patients and their culture and language and so on and so forth. Images, assumptions, and stories. And assumptions get everywhere. Be wary of assumptions. We assume all the time, like I'm assuming you had breakfast, all of you. Is that correct? It's an assumption. Until I scientifically ask each one of you and have data, it's not correct. So be mindful of assumptions and story carried in our minds of ourselves, other people, institutions, and every aspect of the world. So Anis Nin, who is one of the designers, she says, we don't see things as they are, we see them as we are. And that sort of implicit biases that we carry. Here's a great website which offers a free assessment. So if you want to learn about yourself, you can take this test on projectimplicit.net, and it will tell you what are your biases and what is the implicit assumptions that you make. So in our life-long journey of learning, there is past, our life story. There is present, which we are having these inputs from five senses: touch, taste, smell, sight, and hearing. And it constantly goes, as the present moves into the past, we constantly interpret what's going on. And sometimes there are storage errors, and so what I mean by storage errors is that we store our disempowering negative stories from the past and we project them in the future. I was never good in this in the past. I will never be good in this in the future. And so future becomes an extrapolation of the past. But the fact is the future has not yet happened, and it is open to all wide possibilities, right? So disempowering life stories are, I'm not good enough, I'm out for myself, it's a zero-sum game, I'm right, you're wrong, or she or he will never be a team player if you say we're working in a team, because healthcare is a team sport. They are like, my teacher is a jerk and he won't change, because sometimes we have this attitude of, degrading or humiliating learners. Or if we had their resources, we would be great too. Or watch your back, you can't trust the administration if you're a working physician. But we need to turn this into empowering life stories. I have much to be grateful for. The work I do makes contributions to others. I'm part of something larger than myself, and we all are, as we are healers and physicians taking care of others. I appreciate what others do for me, and when I have put in the effort, it has paid off, and I'll seek out the best in others. So this is the mindset, the growth mindset that we need to first have on this learning journey. Another tool I will recommend to you, if you really want to learn your strengths and use your strengths to create that future, that imminent future, is to you can go to any bookstores. I checked last couple of days ago at Said Bookshop in Islamabad, and they had 10 copies of this book, which is on sale. And so Strengths Finder, this is from Gallup, and what the book is not of any value. When you open the book, at the back of it is an envelope, and when you tear that envelope, there's a code there. So you can go to Gallup's website, enter that code, and it will give you an 1-hour quiz, where the questions will appear for 15 seconds, and it's really front of the brain thinking, like what comes intuitively to you. And once you have taken that quiz, you should be in a quiet room, uninterrupted, and so on and so forth. You will get a report, and they would rank you in terms of what really your strengths are. So, for example, my strengths are connectedness, relator, responsibility, learner, developer. These are my top 5 strengths. And then at the bottom, they don't call them weaknesses, they call them non-strengths. And so when we are working in a team is as good as its weakest link, right?
So if any one of us drops the ball, that's where the patient gets hurt. That's where the quality of care goes down. So in that, I need to then work with people who complement me in terms of my non-strengths, right? And that's how you can build a stronger team. But it's a great tool for for self-reflection and insight. And finally, one of the other things that we need to develop is the ability to question, the skill to question. It was actually estimated or calculated that a 4-year-old young boy in England asks 390 questions of his mother on average every day. Can I have this? Can I do that? You know, it's a non-ending list of questions. But as we learn, and this is from US Educational Survey, as we learn writing and reading, our ability to question goes down drastically. We stop questioning things, and we stop being curious. And that brings me back to the art of forming a good question. A good question doesn't have criticism embedded in it. So you don't ask a question in terms of asking, or critiquing someone. You ask a question to really inquire. And that formation of question, you can learn that from a website called RQI, Right Question Initiative. They have all kinds of tools and skills for teachers, learners, in terms of how to develop your ability to ask good questions. And good questions are open-ended, right? They're not yes and no, close-ended questions. They're not about me. They're about general concepts or other things that you really would like to inquire about. So in my second half of this presentation, I'll just quickly go over the art of teaching. And as I said, let the future be the guide. So we have to learn in two different ways. One is the adaptive learning, which fits our environment, which adjusts to change. And cope with threats and react to symptoms and identify things. The way I see this is what I call the hunter-gatherer learning. So for example, I see a patient and I think the patient has myelodysplastic neoplasm. So then I open a book, I open a website, I read specifically on that. So that is hunting. Whereas grazing, like like cows or cattle in a land, is where you sort of expand your capacity, develop creativity, identify, and so on and so forth. This is like opening, getting a weekly, and you can all subscribe to getting a weekly email from New England Journal of Medicine for their table of contents, JAMA, British Medical Journal, Lancet. These are the journals that every doctor should be looking at, and then your specialty specific journals as well, right? So if you're a neurologist, then maybe the Medical Journal of Neurology and so on and so forth. So there's a conventional paradigm and there's an emerging paradigm of teaching. One is that my effectiveness as a teacher is primarily a function of what I have learned and achieved in the past. So my skills, my know-how, my expertise and experience. So it emphasizes the past as shaping the present. The emerging paradigm is that we need to see the future in shaping the present, in that my effectiveness is also a function in how I face these teaching challenges as they show up for me. So the two models are complementary. We need to do both at the same time, which brings me to the concept of polarity and paradox. One of the things that we are taught in medicine is dichotomous thinking. As physicians, as we narrow down the differential diagnosis, right? It is this or that, this or that, this or that, right? But in real life, when you are dealing with patients or teaching how to manage care, how to work in teams, the competencies that we all need to develop, professionalism, scholar, medical education, quality improvement, so on and so forth. It is this and that. It's not this or that. And so that and becomes a very important connector. So for example, like here's a paradox. Sometimes less is more. We all say that, right? Like in fashion, Coco Chanel, pioneered that if when you're going out of the door, take one piece of jewelry off you. So for example, for ladies. So less is more.
or we need to manage continuity. We all like to see everything's not changing too much, but change is coming. Stability against revolution, heritage for renewal, and so on and so forth. So here is a balanced paradox where you're trying to manage certainty against openness. So here, where it says truth exploring. If you're too certain and not open, then you're dogmatic. You are very strict in your thinking. लेकिन अगर आप थोड़े से open हैं अपने ideas में और then but not certain, then you're inconclusive. आपको किसी चीज का भी फैसला नहीं कर पा रहे आप. उसके मुकाबले में एक अनबैलेंस पैराडॉक्स ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एनफोर्स बच्चों को आपके साथ सख्ती करते हैं कि तो आपने ये करना है, लेकिन आप उनको वार्मथ और एम्पैथी नहीं दिखाते, आप उनके साथ प्यार से पेश नहीं आते, तो दिस इज हार्शनेस. Whereas on the other side, अगर आप उनको खुली छुट्टी दे रखी है और उन पे कोई उसूल नहीं लगता, so this is permissiveness. So whereas where one should be is compassionate enforcing, right? It's tough love, tough and love. So I think it is these kind of polarities and paradoxes that we actually find in practical world that we need to learn. And another final probably piece in being a teacher is to be mindful of generational differences. So my generation, we are Gen X. We have seen probably the most change in our lifetimes. जहाँ एक trunk call book कराई जाती थी और एक telegram आती थी और अब phone किसी के पास नहीं था, and so on and so forth. To now कि मैं artificial intelligence पे काम कर रहा हूँ और so on and so forth. उसके मुकाबले मिलेनियल और जो ये छोटे बच्चे हैं जो कि 15 साल से और उससे कम या 26 साल से कम, तो they are completely different in terms of how they see technology and how they interact with it. So as teachers, we need to be mindful of how learning is happening for this generation. Yeah. So teaching millennials, अक्सर हम ये सोचते हैं, myth ये है कि they are impatient, but reality ये है कि they are very efficient. तो उनके साथ डील करते हुए we should avoid inertia and we should embrace innovation. हम समझते हैं कि they feel entitled कि ये जी मैंने फीस दिया और आप मुझे ये पढ़ाएं, ये सिखाएं और ये वो. The reason, the real reality is they are motivated. और वो हायरार्की को पसंद नहीं करते हैं कि शायद अभी तक पाकिस्तान में वैसे ये सिलसिला है कि आप सरपंच हैं और फिर पंच हैं और इस तरह के सिलसिले जो हमारे, लेकिन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल डील विद ईच अदर एट इक्वल लेवल. आई एम नो बेटर देन यू एंड यू आर नो बेटर देन मी इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो देयर इज अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी. जो millennial generation है, they're motivated by purpose, organizational mission and skill. They want to do something with their lives. They want to, like इसी सिलसिले में the idea of planetary medicine, like what's happening environmentally and globally, has become very important to them. So there are a few others that are listed here, but you get the point. The thing is that we need to start seeing them with an open mindset and not and see the reality as it is and embrace it. The other concept in teaching is double loop learning. So what we do in terms of why we do what we do is important, and then what we do. So there are certain strategies, techniques we apply, and then we get results and consequences. So single loop learning में ये है कि you take what you have learned. अच्छा आपने ये सवाल गलत नहीं किया, आपको ये concept नहीं पता, and so on and so forth, and you take it back. But in double loop learning, so you just adjust to that. What you do is you actually go back and you look at the bigger picture and the culture of learning and the assumptions that the student had and what behaviors are being governed by those assumptions. So you need to think again. The best thinking you can do is about yourself in terms of how I can be better in certain things. So इसमें there's a bit of a difference between macro learning and micro learning. और ये बात मैं पहले कर चुका हूँ in terms of what I want to learn now versus what I want to learn new skills. और फिर वो classroom में है ये at the bedside of the patient and so on and so forth. And finally, bringing work and learning together.
Eric Kendall said that our ability to acquire new ideas from experience and retain these ideas over time in memory is what learning is. तो इसमें the formal learning ये जो इस तरह की classroom में हो रही है, it's just 10%. 20% is informal and social learning that we learn, in our environments. But most of the learning happens, 70% happens, when we put all this knowledge into action. And that comes in through experiments, experience, reflection. And that is important that we reflect and conceptualize. So my take-home messages are, the ability to learn faster than the competitors is the only sustainable competitive advantage. Knowledge has to be improved, challenged, questioned, and increased constantly, or it vanishes. And the art of teaching includes unfreezing the mental maps, focusing on the future, and applying the genius of and. Thank you for your attention. Questions? Thank you, Dr. Imran. Very enlightening talk, ji. Changing the mindset, मुझे तो समझ आई after I read 7 Habits. Beautiful book. Those who haven't read it, please go through it. Or that's what it's all about. Plurality. One size can't fit all. And then seeing beyond what is apparent and challenging one's reality is the way to go forward, right? So Dr. Imran, wonderful message. Thank you. Our next speaker is Dr. Masud. He has come all the way from United States. He's a professor of critical care at Cornell. And let's see what he has to talk about. Dr. Masud. Yeah, it's there. Slideshow. All right, assalamu alaikum. Fantastic talk by Dr. Mirza. I'm learning, all right, so really, can I have show of hands who wants to become a leader, not a political party leader? Let's be clear about that. A leader in what you're doing. Anybody wants to be a leader? Show of hands. Fantastic, fantastic. What about the big back people voice? You want to be followers or leaders? If you want to be leaders, you need to come in front. So anybody in the last 2 in the rows, I will ask questions from you. People in the first 10 rows, they're exempt from me asking questions. So be prepared to be asked questions. This mic doesn't move, but I will come to you. I encourage you to come close. We are close, all right? So this is my disclosure, all right? So I'm going to read a statement which is very important as to why a leader is a key person. So I'm going to read this thing. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. This statement applies to every bureaucracy in the whole world. Whichever, if you think the bureaucracy in Pakistan is bad, please come to America. I'll get you through the painful sin. So all this applies to a thing. What it really say that if you assign a job to a committee, not get done. There is no accountability of a committee. It's really about leadership, the person. The important thing is when I tell my children, who have not grown up, mashallah, I'm a father of 3 daughters, that, okay, you want to be adult, you're empowered to make decision, but then you're responsible for your decision also. It goes both ways. You can't make decision called, Dad, I'm out of money. Dad, my car is flat. Well, Dad is at work, so you want to have a car, you own everything. And please make sure you figure out a way to get the gas or petrol in the car also. So you want a car. So it's just one of those things. So I want to be leader. I want to be leader. Yes, sure. Then leaders are the one who then pay the price and the fame also. So, all right. So let me just kind of, and I'm going to, okay, as I said, I'm going to ask the black rows first. So what is leadership? So the last 2 rows,
2 rows. This is question for you. And if one of you doesn't volunteer, you'll force me to walk. I'm an old guy. I can't walk so many stairs. So please tell me what is leadership. Last 2 rows. Anybody? Or you can snitch on anybody. You can shake your other partner and tell them he or she. Anybody? This is all right. Excellent. Please speak loudly. You can lead someone. Okay, that's good. She's a very smart person. She took the word, cut into half. She's lead the person. I like you're smart. You're a very intelligent person. So she didn't give me an answer, but she gave me an answer. But she gets a pass mark, but she did give me some answer. All right. Now we come to the, I'm going to now request the front row. I'm not going to ask. I'm going to request the front row. I need some volunteer to tell me what is leadership. Yes, sir. Okay. Who has a vision? That's a very important answer, right? Okay, so and again, if all are in, I knew all the answers, I'll be a leader in a very big place. I won't have to do anything, and so we're going to learn in the next few minutes. And Dr. Arsalan already told me, as a leader of the session, or moderator or leader, I need to expedite. So we're not going to talk to it, but we'll come to some discussion as to what inside. Yes, sir. Okay. Fantastic. So you brought a 3-point. Reaching to the goal, connectivity with the team, and making the journey. So these are all good elements. These are all elements of leadership. Okay, so the next question I have is, why is it important to talk about leadership? All right. So last 2, okay, yeah, all right. Why is it important to talk? Why do we care? Okay, to manage, to control. Okay. All right, that's a good thought, that you want to control what needs to be done, and you're going to do that. Okay, that's one point of it. Fantastic. Anybody else? Why? Yes. Absolutely, 100%. Mothers are a leader. My mom, the Prof, Ammiji, mashallah, bless her, you know, she didn't give me a choice. Just to give you a little bit journey, when I was growing up, तो मैं सेंट मेरी से पढ़ा हुआ यहाँ पिंडी सेंट मेरी से पढ़ा हुआ जब मैं गया तो मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग में, आपको पता है कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन में चॉइस होती थी, मेरे सारे दोस्त जा रहे थे इंजीनियरिंग स्कूल। मैंने कहा मैं क्या करूंगा मेडिकल स्कूल में, मैं प्री मेड में, मैं प्री इंजीनियरिंग में जाता हूँ, दोस्त हैं सारे। तो दैट वाज द रियली डेप्थ ऑफ माय नॉलेज, यू नो। तो अब मुझे कहा नहीं नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तो आप जो कह रही ना, आई वाज नॉट गिवन अ चॉइस बाय माय मदर। सो बट दैट्स अथॉरिटेरियन लीडरशिप। आई होप वी डोंट हैव टू डू दैट। Okay, I would like to give my choices. Ji, aap. Okay, so you brought me 3-point. Completion of the task, team effort. That means he or she is not going to be and judge and guided. Fantastic. Okay, good. Vision. We were talking about the vision. Okay, good. How? Okay. So you guys are very smart people. I should finish my talk. You all give me all the answers. Very good, mashallah. Go ahead. Speak a bit louder so rest of people. Followers can fantastic. And actually, one of my slides is on that innovation people. Okay, anybody else wants to volunteer? All right, this is good. So it's very important. So it's really, and again, I'm talking about medical leadership. So we're going to stick to something related to medicine. Okay. So it improves quality of care. All right. It creates adaptable leaders. Adaptable, you know what needs to evolve. Encourages forward thinking. We talk about vision, we talk about visioning, completion wise, produces innovative leaders. So part of the leadership role, which we are drummed into many years, is that I always have to find a successor. Because what we are grained for the last, I moved out of this country about 34 years ago, what grains into is that you are not important. The system is more important than you. You should always prepare your successors because you can drop dead. The hospital cannot stop because of one person. Nobody is a superstar. Everybody can be replaceable. So that's drilled into our mindset. And part of the thing is that we always have to create that if I'm going to sick, who's going to run the show? But if I don't prepare the person, then somebody will suffer. So you are not important. You know, in terms, and
exaggerating a little bit. You are important, but you're not indispensable. I think that's the right word you should be using. You're not, everybody is indispensable. We're all replaceable. I tell my resident, my hospital institution Methodist, that, I'm as good as the next person. If I drop dead, people say, oh, acha, doctor tha, ye tha, but I need my ICU bed. That's it. We all are indispensable, okay? All right, and communicator in chief. I didn't say commander in chief. Please be careful. Please do not report me to anybody. I need to fly back, So communicator in chief. If you cannot communicate, those are not very effective leaders. They will be leaders, but not very effective leaders wise. And again, we're talking in concept of medical knowledge. I just want to be careful. Communicator in chief. Okay. All right. So this is Soul, Gel, Soul, and I'll go that. This is the paper that I published with my colleagues, and so this is our headline, Soul, Gel, Soul. And what is Soul, Gel, Soul? Before Dr. Arsalan starts to give me the eye, I need to wrap up also. All right, Arsalan. Okay, so soul, what we do was solid. What does it mean to be a solid leader? Okay, ethics, core values. It is so imperative. Ethical leaders and ethical thing, and again, keeping in contact with ethical leaders. And what are your core values? So before I tell you my institutional core values, let me ask you all, and people who already gave me answer, I want somebody else to say, what are your core values or what your institutional core values are? Anybody takes? Just give me a guess. No wrong answers. Any core values? Yes. Modest and humble. Okay, you can't take credit for everything that is done. So that's very important. Even if you do it, make sure. So what is important is when you're describing, you should try to avoid the words, I did it. You should always, even if you did it, you never work alone. Somebody's even typing your report. Okay, somebody is finalizing. And even if you don't do it work, somebody at home, if your husband or your wife, they're helping you. They created the environment for you to function. So it should discourage to say, I did it, should be, well, we did it. So you're about, anybody else, core values, anybody else? Yes. I'm sorry? Confidentiality. So you cannot spill secret. You should not be forwarding their messages. It's very important, especially with this wars of WhatsApp. I see, observe, people are forwarding people's messages, and my personal belief is, if I'm going to forward somebody's message, I need to have their permission. Okay, so absolutely, and I heard honest somebody, honest, absolutely, but honesty cannot be relative honesty. It's very hard. And I would encourage you on that is that honesty doesn't mean that you should rub it into anybody's face. And honesty is some sign in which actually our religion and our Prophet Muhammad is a fantastic example of that, is to sometimes keep quiet. So if the environment is not right, you don't have to spill secrets. Sometimes keeping quiet is a better way and not to public. So I tell people, I tell my residents and fellows and everything is that even if you know something's wrong, nobody wants to be publicly humiliated. Please, even if they're doing it, you can say, one of the way I teach my residents is you can raise a question, say, that there can be another point of view. You don't have to put them down. You can say, maybe there's another point of view. And if you disagree, talk to them one-to-one, but don't publicly. So, okay, I heard more hands raised. I saw, yes. I'm sorry? Empathy, fantastic. Think about others' feeling. Fantastic point of view. Yes. So social context. So what you're telling me, I should not be leader over here. I'm so far out in the country, I can't be leader over there, but I understand. I was just joking. I'm sorry. I apologize. I like to, because I'm really, if I try to look for a job in Pakistan, I will miserably fail and somebody will fire me the next day. I'm very, very clear on that. Anyway, so let's keep on talking. So in our institution, these are the core values which eat every single person, whether you're the peon or the doctor or the CEO. These are our core values in this. Integrity about self and others. Okay, compassion in all that we do, in everything, whether we're interacting with each other, our patients and families, and the lowest person wise. Another point I tell all of my house staff and my colleagues, and actually I have fired physicians, I tell them, I'm okay for you to pick up a fight with your senior. I will never be okay if you pick up a fight with your junior or you humiliate them. And I physically fired people because they humiliated the junior staff.
So I would say I'm more scared of high behavior people under me versus above me. I'm very scared because they can't speak up as much freely as people above me. Okay, so I always tell that please be more mindful when you're dealing with people under you. And the more lower under you, the more you want to be respectful because they are voiceless. They're going to be afraid to talk. So just point of view. Compassion and all what to do. Accountability. Accountability for yourself, for others. Hold everybody accountable. Fairness and consistent. You can't have selective accountability. Selective accountability is very common. So accountability for others, fairness, respect. Even if you're fighting, fight respectfully. Okay? Nobody wants to be humiliated. Even if they're bad people, which you think they're bad, respectfully. Disagree respectfully. And unfortunately, what social media has done is that people are very comfortable passing judgments and fighting wars, which they would never ever do if they were in face. They would never say that in face, but they're comfortable saying that. So these are things. So these are our core values and excellence in everything that we do. So these are in our institution, I care values, we call it. These are Houston methods, we are drilling it. And you can't live these values if we can't name them. So that's why we may simplify that, because if you ask any person who works in Houston Methodist, they'll always tell you I care values. Okay, so let's keep on going. Component solid context. A leader determines based on W's. So if you want somebody to do a project, you have to convince them or explain to them, why are you doing it? If you cannot make the case of why, they will not be in their heart doing it. They may just do it because somebody's giving an order, but they will not really do to the best what they can. So why is very much. And who's going to do it? So committee is fantastic on keeping minutes and wasting hours. I hope you understand that pun. There is a pun in it. Minutes of the meeting comes through everybody. All right? But 10 people sat, 10 hours of valuable time of and nothing came out of it. And everybody nodded, everybody said, yes, good idea, good idea. Who disagrees in committees? People are afraid to be socially calling out. So I'm just saying the committee, but somebody has to be responsible. And what will they do? So it's not who, but who will do and what will they do? And when? I'm a very stickler of timeline. I'm a lazy person. I don't do very good if I don't have a deadline. I work with that mentally. I know I have to do that. And where is supposed to be done. So, and determines how you lead. So these are the things. If you want somebody to do a project, somebody initiative, keep these principles into your mind and determine your lead. Okay, all right. You know, he's Dr. Masud is slowly walking to remind me, Aslan, I'm going to get there. Okay, can you make the case? Why? To me, the most important aspect is the why. If I can make you understand the why, and make a case to you, and you connect with me, why I'm saying is a why, I can tell you, more often than not, people will do it for you. Everybody wants to do good. I very strongly believe people want to do good. Okay? But if they don't connect the why, they would not understand, they would not relate. So please make sure. Okay, context is important. Solid framework, what it means. Micromanaging kills an organization. If the leader is micromanaged, okay, why then you have me? If you're going to tell me everything to do, if you're going to give me all the orders, why you have me? Why am I there? Please do it yourself. I mean, So if you're going to make a director or somebody, let the director work. If you're going to manage it, then why do you have a director? That means you're paying somebody's salary to really be a stenographer or whatever, type of, but I'm sorry, I call it program manager. So if you have a director, let them be a director. Leader provides a broader framework, general guidelines, and periodic debriefing. It's very important for the leader to keep in touch with, okay, what's happening, not happening. Tell me what the barriers are. That should be my job. Intended and unintended consequences. So I learned that very later on, this concept of unintended consequences. I didn't used to think. I always looked at, okay, if I'm going to do something, this is what I intend to do. What I don't used to think, and now I think a little bit more, is what are the unintended consequences. It can be unintended consequences of people, person, process. So I would encourage you, when you're trying to do something, think of what you think would happen. And the other thing, what the other negative things will happen to others. So unintended consequences. I learned very late, it was too late, but I thought that all right. Okay, and manage the outcome and processes. So you manage
the outcome as a leader, not the actual details. Leaders don't create followers, they create more leaders. The more leader there is, so I feel very strongly, I've learned through painful thing wise that as if you teach to people, they will say, we want to create more leaders because then the person above makes it easier. Okay, so that's one of the fundamental thing. So gel. So gel, why did we choose gel? Gel is gelling, coming together, bonding, collaborating, partnership, teamwork. So gel, it's like you can call it jello, or like a gel is something you're gonna stick together. The most important factor in survival is neither intelligence nor strength, but adaptability. And I think Dr. Mirza talked about it, the constant learning he talked about. That was about adaptability. If you just learn, you will not define. Anticipating, forecasting, optimistic, and be realistic. There are a lot of words. Actually, typically these things takes 1 or 2 days to do that, but I'll be mindful. So technological information evolution, which is taking place, Dr. Mirza talked about it, how all that information, hiring and recruiting. I never realized how difficult it is to fire people. There's a lot of bureaucratic process I have to do, emails, paperwork, and then pain, mental anguish of firing people, thinking, oh my God, what's going to happen with family and not family, and their emotional thing wise. So I've learned what a lot of people learn. The most important job of a leader is hiring the right kind of people. Firing is painful. It has a lot of trauma and time wise. So hiring is very important. And so, all right. So gel creativity, innovation, we talk about innovation, translation research. So what I would say, we are taught also that every crisis is an opportunity. So let's talk about COVID. COVID showed that, a lot of things can be done on Zoom, on meeting. We would have never done that. It showed that not everybody needs a ventilator. It showed that we can connect and all the stuff, that we can work with that. So there's a lot of things which came out in innovation. Leaders think and talk about solutions, followers think and talk about problems. So if there is in my office, there's a sign, very big sign, no whining. So people that come in my office say, oh, Dr. Masud, this is not happening. I don't have this, I don't have that, I don't have that. That's whining. That's really whining. We're all adults now. Okay, tell me what you done, then come up with solutions also. I refuse to listen to them if they're not offering me solutions. If they want more whining, I refer them to, let me give you a hug. Stop whining, like a baby, I heard you, like, okay, all right. He's a smart man. He already did something which I to get it. Okay, so imagine what if. So I want a leader to think, what if? What if we do this thing? What if? So think about what if. I tell you, your own creativity and the people you work with will be amazing. Ask them to think, what if? What if? It's a very simple question. All right. Connectivity, as we talked, we start repetition. So just because you tell a process or something like, don't assume everybody will understand the first time. Repeat, 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 repeat. Okay? And then you ask your audience or your team, did you understand? And ask them either in public and private mode, did you understand? Is there anything I can do? Are we on the same game plan? If they and you encourage the atmosphere that they can question that they're on the same game plan. Twitter, Facebook, all has gold standard for now. All right. Assuming the role this component solvent, as a leader, you have to be follower. To be visible to his team, interact regularly, and sometimes be the role of follower, ground soldier. And again, I oversee about 8 hospitals, about 350 ICU beds, about 935 nurses. I oversee about 90 physicians. But half of my job is taking care of patient bedside. The advantage of that is that nobody can question me what is happening because I'm working almost every other day I'm working. So if I don't work, I would not have credibility with my team because they can always say, Dr. Musi, you don't know what's happening. I know what's happening because I'm working there. I face some challenge-wise. So it's very important to be working on the front line. If you're not working the front line, you will lose out on a lot of things which is happening. So I encourage that but not everybody, you don't have to work all the time, but you have to think about that. And again, leaders should recognize they're a world expert of everything. It's a very common thing. I'm the expert. You're not. I have so much. That's why I hire people. They are the experts. And my biggest IT expert is my daughter. I'm clueless. So she solves all my problems. So, all right.
Be a catalyst. You inspire, you talk, but not to talk. And again, Doctor, I want to stick with the time. I'm sorry, there's a lot of verbiage in there, but really is that you need to be the instigator, inspirator, and everything like that. And okay, openness, transparency, truth, and trust. Transfer. So every physician in our organization, a critical care physician, we have got 90 of them. Everybody knows everybody how much they make financially. Everybody's salary is known to everybody else. There's no favorites. We have categories, 1, 2, 3. Everybody knows. There's no, because I believe very strong transfer. And truth, you have to speak. Sometimes truth is difficult. It's difficult. It's easy said, we were all trained कि सच बोलो. सच बोलना is the right thing to do, but किस time पे सच बोलें और कितना publicly बोलें और कितना करें. You have to be mindful of that. या अगर सच बोलना है, सच भी बोलो. और please, I would request you that if you have a serious conversation, never do it on text, never do it on WhatsApp, never do it on Facebook. Always either do it in person, face to face, and never have that because the other person doesn't recognize where you're coming from. And the leaders, they have a hard time, including myself a lot of time, to say that I don't know. One of the things I tell residents, because I prepare them for interviews also, we will ask you a question, you will not know the answer. What the other people may do is they will start making up answers. Tell them, I don't know. That's what I want to hear from them. You're not supposed to know everything. If you knew everything, why do you need residency? Okay, then you should be taking my job. So we all don't know. And we should acknowledge that. It's okay. All right. But compassion, this is important. I talked the whole talk about it previously. I feel for you, I understand you. So I may not offer. So a lot of them, they ask for every hospital that I've been to many countries, I spoke everything. They say, every hospital I go to, they want more money, more resources. They all say they work the hardest. Every country, Singapore or Canada, everybody tells me they work the hardest and they have no money and they have no support from administration. If you have this feeling in Pakistan and RMU, welcome to join the world. You all in this, we are all in the same way. So I feel, but sometimes the support is thing. For a leadership, if you're a leader, take a break, form alliances, build skills. And again, these are for the leader. This is from Colin Powell. It is not as we think, it'll get better. Every good thing or bad thing will go away. Be careful, you choose. You want to be leader? Be careful. When you become a leader, you sometimes, oh my God, my life is ended. Now I don't have time off. You're a leader. When you're a leader, you're all leader 24/7. Check small things, share credit, remain calm and be kind. I can't tell you how important kind is. Have a vision, be demanding. This is my last slide. The power of no. Learn to say no. If you're already doing 5 projects, you cannot take the 6th one. You will never excel on the 6th one. I can't tell you that how important it is a power to say no. If a leader is a good leader, they will understand where your no is coming. If they're not a good leader, they will not recognize that. And maybe you should not be working for that leader. I can't emphasize, think about this power of saying no. I cannot do it. And the way I say, Dr. S, when they ask me to do more projects, it's a fantastic project. I think it's going to be great. But what would you like me to drop off right now to pick up your project new? When I tell them that I'm going to have to drop something to pick at them, then most of them, they back off because they don't want me to drop it. I'm just giving you ideas. These are my escape tips to do that, okay? All right, that's it. That's it. So there is an art of saying no. No. That's where I'm saying. So there is a ways of saying no. That is what so I told you, you didn't hear me no. What I told my boss was, what would you like me to drop? And I'll happy to pick up yours. I didn't say no. It's the power of no is to say no without saying no. Does it make sense? All right, thank you all. Ladies and gentlemen,
gentlemen, please remain seated. जब लीडर्स की बात आती है तो जी मेरी नजर में लीडर की डेफिनेशन ये है कि one who you can openly communicate with without any fear. I work with two great leaders, three actually. First is my head of department who's sitting over here. Second is Dr. Ifra, who we work with in medical education. And the third is Professor Masud that you just heard. We are developing this new journal called the Pakistan Medical Journal, in which international diaspora are going to write articles, and we are trying to bypass the Pakistani system and go directly into PubMed and Scopus. And do wish us luck. So my next speaker is a very, very interesting person. This Professor Rehan Ahmed Khan, who's come from Islamic Medical College. He's a multi-dynamic person. He is the professor of surgery over there, and he's an eminent medical educationist. He looks after the MHPE program and is a facilitator over there. So Dr. Rehan, we'd love to hear from you. Thank you, Arsalan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We'll do excellent talks by Dr. Imran and Dr. Faisal. And I will, continue from where Dr. Imran, left us that the importance of teaching and learning. And what I'm going to talk to you about is actually whatever you do in teaching and learning and assessment and clinical research, there would be role of artificial intelligence. And artificial intelligence is the new buzzword here. How many of you actually use artificial intelligence when it comes to, say, developing the content of your lecture? Please raise your hands. Good. How many of you make multiple choice questions when using, okay, good. So we have a lot of people here. And what about research? How many of you do research while using artificial intelligence? So I can see a few hands raised. So what my talk is about is actually, I'll share with you the underpinnings of what artificial intelligence is. What is the black box of artificial intelligence, and should you trust the decisions taken by AI, or you should take them with a pinch of salt? And in going through that journey, we'll discuss four main things. One is role of AI in teaching. One is role of AI in assessment, in clinical management, and research. And I've also give you a brief talk about the ethical issues which we are facing. So what is artificial intelligence? You see, any computer or any software which can think and act like humans is artificial intelligence. And that would, I usually ask people when I teach this, that what is intelligence? So may I also ask questions like Dr. Faisal was asking? What is intelligence, by the way? Anyone? We have so many intelligent people sitting here. Okay. So yeah, there are many definitions, but one of the best, which I like, is the ability to solve a problem rationally. So now we're talking about not humans, but computers or softwares trying to solve your problem like humans. The history goes back to 1943, but I'd like to share this picture with you. This is the first computer which actually the psychologist thought, the one who's standing close to it, next to it, that it can actually, make decisions on its own. It is called a perceptron based on what we call as a neuron. So, we think all these complex tasks are done in our neuronal network, hence the name perceptron. So this one was the first one, only to realize what it can do was to just make a decision that are those cards which were used for storing data are punched on the right or the left. That was the first computer which had the ability of artificial intelligence. This you all know. हम सब लोग जब भी बात करते थे AI की,
तो हमारे जहन में या टर्मिनेटर आता है, या अगर आप मार्वल फैंस हैं, यू टॉक अबाउट वैंडा विजन एंड यू नो ऑल दीज ह्यूमनॉइड्स. लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते थे कि एक्चुअली एआई हमें कैसे अफेक्ट करेगी. बट देन यू स्टार्टेड हैविंग दीज फीलिंग्स लाइक पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट्स. मैं गया फॉर एग्जांपल किसी कंप्यूटर शॉप पे, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस, ये कैसे हो रहा है, फ्रेंड सजेशंस कहाँ से आ रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मे बी अभी हमारे मुल्क में इट्स नॉट दैट कॉमन, बट इन द वेस्ट both of our guest speakers can relate to that. I'm wearing a digital watch. It has an ability to monitor my ECG, and it is connected to my cardiologist in the hospital. तो ये सब decisions कैसे हो रहे हैं? Based on artificial intelligence. But what got our attention? What was the breakthrough actually? And that was Chat GPT. ठीक है? And then to share with you, अगर आप ये देखें figures देखिएगा कि 1951 से 2000 तक there were only 11,149 research articles on artificial intelligence. Out of till to date, we have almost 200,684 5,684 articles. This trend in from 2000 to 2010 slightly increased, but the major number of research articles on artificial intelligence is in last 4 years. I recently published an article, what was, like hardly 5 months back, was on artificial intelligence, has got the most number of citations, 200 citations in only 5 months. So everybody is now talking about AI. और जब मैं बात करने लगा हूँ आपसे AI, it's not like theory or anything. This is what I'm doing daily in my life, and it's a game changer. So, the way I teach, the way I learn, the way I do research is now completely changed. So let's talk about AI in classroom. सबसे बड़ा हमारा dilemma, या मतलब dilemma तो नहीं कहूँगा, but I'll say कि हमारी task क्या होती है as a teacher. One of the tasks is to make a lecture. और lecture बनाने के लिए, usually it will take from maybe from few hours to few days, depending upon आप क्या चीज बना रहे हैं. लेकिन with artificial intelligence, say what you can do is, say you want to prepare a lecture on acute appendicitis. तो आप क्या करेंगे? Now let me introduce Chat GPT. Majority of you are using Chat GPT, but before I explain what Chat GPT is, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि artificial intelligence काम कैसे करती है. So there are 4 terms which I'll talk with you. Number 1 is supervised learning, unsupervised learning, feedback learning, and then generative AI. So supervised learning, the concept is, when many of you sitting here are supervisors. So what you do is, there are fellows, working with you, and you supervise them. But in artificial intelligence, supervised learning means that the computer programmer does the data labeling. He or she will tell this computer software that if somebody is telling me that they have symptoms of polyuria, polydipsia, and increased levels of blood sugars, or most likely this is diabetes. This is called as supervised learning for the software, and this is also called as data labeling. So cow की picture डालेगा और कहेगा ये cow है, camel की picture डालेगा और कहेगा ये camel है. इसके then data labeling. Then what is unsupervised learning? हमारे लिए unsupervised learning क्या है कि जब हम लोग एक level achieve कर लेते हैं competence का, then we go to the mastery and we take decisions which are based on our experience. Here is when AI becomes dangerous. AI में चल रहे होते हैं algorithms. Algorithms क्या होते हैं? Anyone? Okay, fine. So a flow chart. ठीक है? तो फ्लो चार्ट, तो इस तरह के बेतहाशा फ्लो चार्ट्स बने हुए होते हैं जो डिसीजंस ले रहे होते हैं. जब आप डेटा लेबलिंग कर देते हैं, और there are numerous flow charts or algorithms working in that deep neural network, which is the black box actually, because you don't know what is working in the black box. One of my students is doing a research के challenges क्या हैं AI के. So she called up someone, interview कर रही थी, someone in MIT,
और वहां पे उनसे पूछा, ही वाज अ प्रोग्रामर, यार ये ब्लैक बॉक्स में जो है ना एल्गोरिथम्स का मुझे तो पता नहीं है, एंड एज अ डॉक्टर कि तुम लोगों ने क्या एल्गोरिथम्स बनाए, तुम डिसीजन उठा के दे देते हो. There was a very interesting answer and he said, why do you want to know that? Are you not satisfied with the outcome? इसमें हम बात करेंगे बाद में, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक डीप न्यूरल नेटवर्क है जिसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, जहां पे एआई की कैपेबिलिटी एक लेवल पे आके हो जाती है कि एआई स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स ओन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीजंस किस बेस पे हो रहे हैं. देन देयर इज ह्यूमनिस्टिक फीडबैक लर्निंग. वो क्या चीज है? हम जब भी लर्न करते हैं वी वांट अ फीडबैक, एंड सो डज एआई. जब एआई आपको आंसर देती है, चैट जीपीटी आपको आंसर देता है, तो व्हाट इट डज, ये आपसे पूछता है कि क्या ये आंसर एक्यूरेट था. डू यू थिंक आई हैव गिवन यू अ प्रॉपर आंसर? एंड व्हेन यू से यस, इट रिकॉर्ड्स दैट. And doing all this, what it does, it generates what? Essays, poems, clinical judgments. That is generative AI, and hence chat GPT, generative pre-trained whatever chatbot. Yeah. So transformer, yes. So these are the main concepts of AI. अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो आपके लिए decisions लेना मुश्किल होंगे. ये this is what AI का main वो है, ब्राउजर में जैसे आपको नजर आता है. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आई मीन यू यूजिंग इट सो यू नो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉम्प्ट और द इंस्ट्रक्शन. मैं आई ऑलवेज टेल दिस लिटिल स्टोरी टू एवरीवन. सो लाइक दो ख्वातीन हैं, एक खातून जो है वो घर पर हैं, और फरियाल के साथ मैंने एक्सरसाइज भी की थी इन माय लास्ट वर्कशॉप. सो अब वो खातून या दूसरी खातून जो है वो खाड़ी गई हुई हैं, ठीक है. And now this lady rings up the other lady in Khadi and she says, can you bring me a pink suit? So like now, this is a very broad prompt and she would like, there are many pink suits. So she said, nahi, acha, can you bring me a pink suit which is with embroidery? So fine, okay, but then you need to tell the size as well. And many other specifications. So your prompt has to be specific. Jitna aap proper instruction देंगे उतना ही प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा. एंड दिस इज प्रॉम्प्ट साइंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. इफ यू डोंट नो दिस, सो दिस इज व्हाट यू सी. यू यूज सिरी, एंड इफ यू यूज एन आईफोन यू से सिरी कॉल मी अ कैब. So what is it going to do? It's not going to call you a cab. It's say, okay, hi cab. So this is important, that how do you use these prompts? So just to show you, I mean, most of you are using it. So you just ask, prepare a lecture for medical students on acute appendicitis. You can be more specific, prepare a lecture. So it starts working. And then you can ask, can you please write some learning objectives? This is the most difficult thing, which I feel is because it's not easy to generate learning objectives when it comes to higher cognitive level. It can do that for you just with the click of a button. And so this is like you conversing with that chatbot. So the conversation continues. Can you add some pictures to this lecture? So it will tell you like the power of no. Sorry, I can't do that. It's because it cannot do that actually. The reason being because it tells you that I only give you chat. But having said that, there are updates. Now, this is what I'm sharing with you, Chat GPT 3.5, Chat GPT 4 has the ability to make pictures. Dolly, another software that which has now advanced features. Not only Chat GPT, but we now have Copilot in Microsoft Word. If you have a version of MS Word Excel, there is a built-in AI plugin in MS Excel, MS Word, which can do the stuff for you. Then you have Bard, which is Google's Bard. You can use a plugin, and they have also now released a Gemini. All of these are, the things which are changing on daily basis. बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि this is not something जो कि आप ये समझें कि कोई future में होगी. This is what is happening on daily basis. So if I have to make a lecture, I will give a prompt to the Chat GPT. It will generate learning objectives for me. And it can even, then I can ask to generate questions for me. And I can ask, generate content according to learning objectives for this lecture. So this is more or less about कि आपका prompt या instruction क्या है.
तो जैसे जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन बेहतर होती जाएगी, एंड देन सिर्फ कंटेंट तो जनरेट नहीं करना, पावर पॉइंट ही बनानी है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ यू हैव Office 365, not the usual one, but the Office 365, just go on to the online version. Whatever content you have generated, just paste it in the MS Word and ask it to give you a preview of the PowerPoint. It will generate the whole PowerPoint for you in like few seconds. There are other specific websites where you can generate PowerPoints. लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस इंफॉर्मेशन को आपने वेरीफाई करना है. So what is going to happen, जहां बात कर रहे थे डॉक्टर साहब about learning, teaching, lifelong learning. So now we have to be smarter than AI. जब हम बात करते हैं ना Bloom's taxonomy की remember, understand, apply, analyze, evaluate and create, अब probably in times to come humans have to be at a higher cognitive level where they can analyze what artificial intelligence is telling you. So if you're not, then what will happen is you will rely on that and it will have consequences. Again, let's talk about assessment. So सबसे मुश्किल काम है MCQs बनाना. बहुत मुश्किल काम लगता है लोगों को. आप सिंपली जाके इसको कहें कि जी मुझे 5 MCQs दे दो. आपको ये MCQs पसंद नहीं आते, just ask ChatGPT or any other relevant software. जो मैं बात कर रहा था आपसे, Copilot, Bing or whatever, Bard, just ask it to give a multiple choice question with a scenario. It will add scenario to it. And then if you ask it कि even जो उसके right answers हैं उसकी explanation दे दो मुझे, it will give you the explanation as well. ठीक है? And then for medical educationists, if you want to check कि इसमें कोई flaws तो नहीं है, यानी item flaws तो नहीं है, just ask it कि item flaws बता दो. If you want assignments to be checked, just cut and paste the assignments to it, ask it to check, and then you can train the ChatGPT. Give it the rubric और उसे कहो मेरा क्वेश्चन इस तरह से मत चेक करो, इसको ये जो rubric मैंने दिया है, रेटिंग स्केल दिया है, इसके मुताबिक चेक करो. The life is like becoming easy, but you need to learn all these skills. So ये ऐसी cues आ गया, it's not very clear. Research में बहुत role है. So research goes beyond ChatGPT. So when I talk about research, there are many softwares. I just share the names with you because I don't have that much time. But you can use SCite, Research Rabbit, Semantic Scholar, Chat PDF. Just to share with you, Chat PDF पे आप जाएं, PDF upload करें. अगर आपने एक scoping review लिखना है, systematic review लिखना है, you don't need to go through the whole article, but it will analyze the whole article for you and you can ask specific questions and it will give you the answer. So that's amazing actually. So generating research ideas, you can go into ChatGPT, आप सारा कुछ कर सकते हैं, पूरे का पूरा paper generate कर देगा. लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से paper generate कर देगा, तो would you get away with it? The answer is no. क्यों? Because ये मैंने आपके सामने जो picture share की हुई है, ये show कर रही है 0% match for an article which I generated through AI. Very good. क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह का article तो पहले किसी ने लिखा ही नहीं है. तो यहाँ तो पहली दफा आ रहा है, तो similarity index तो 0% आ रहा है. तो आप तो कहेंगे वाह, तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई. लेकिन ये नया इंडेक्स है, AI index 100%. So AI index is 100%, और अगर 100% index है, by the way, जो आपके लिए allowed है is 19%. So 19% similarity index, 19% AI index. लेकिन having said that, there are softwares which can actually humanize the AI written वो. लेकिन ध्यान में ये रखिएगा, आपने सुना होगा कि one of our organization institutions में के chairperson थे, and we got to see in the newspaper कि उन्होंने 1985 में PhD की, और उसके बाद 2002 या 4 में somebody said कि नहीं ये तो plagiarized है, let's now use Turnitin. So things are going to get advanced, and if you had used it, it is going to haunt you. तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं इस तरह से करके I'll get away. I'm not going to show you the application, but this is really interesting. Visual DX. Visual DX क्या है कि ये clinical management में आपको help करती है. You can go onto the website और आप
students, they can use it for learning. And what happens is there's a list of symptoms which comes up. You choose the symptoms. History keeps on building. It builds on data. It will eventually give you a list of differential diagnosis and with a lot of data which you can work on. ये कुछ हमारे issues होंगे actually, जो foreseeable issues हैं. Have you considered becoming a robot? So जाहिर बात है कि जब आप robots हमसे ज़्यादा intelligent होंगे, I don't know if this is going to happen. Are you concerned about the increase in artificial intelligence? No, but I'm concerned about the decrease in real intelligence. People are asking this question. तो जो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि probably हम अभी कहते हैं ना एक bright student है, एक average student है और एक under average student है. Probably in times to come there will be a bright student and an under average student. It's because you have to be better than AI to actually use AI. ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था. This is very important. आप अगर स्कूल गर्ल जाके लिखे ना Google search में, तो आपको बड़ी different किस्म की pictures मिलेंगी images में. कहीं आपको स्कूल गर्ल मिलेगी जिसने से फॉर एग्जांपल जीन्स पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, कहीं आपको मिलेगा मिनी स्कर्ट पहनी हुई है और सिर्फ एक शर्ट है, कहीं आपको हिजाब के साथ मिलेगी. अब ये है क्या? बिकॉज ये एआई में जिसने कोड किया, रिमेंबर सुपरवाइज लर्निंग, कि ये स्कूल गर्ल होती है, तो उस तरह का आपको आंसर मिल रहा है. तो वी नीड टू डील विद दैट बायस. तो ये यूनेस्को की रिकमेंडेशंस हैं ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. And I would like to share with you कि biases of the real world हैं, लेकिन how can we ensure more equalized, accurate results? Can we report biased search results? What should be the accurate representation of women in search results? For example, अगर हम इसकी बात करें, AI in the court of law, लोग अब बात कर रहे हैं कि जी AI को use करेंगे decisions देने के लिए. So would you want to be judged by a robot in the court of law? AI creates art, and who's the author and creating wonderful art beyond human imagination? Autonomous car, वे गाड़ी आ रही है, आगे दो लोग pedestrians आ रहे हैं, अब गाड़ी ने फैसला करना है कि who would you choose to hit? कि वो बचाना किसको है, वो मारे किसको? And AI ethics is last slide in medical education, very important. अब जब आप research करेंगे या lectures develop करेंगे, तो ये आपकी considerations होनी चाहिए. डेटा का सोर्स क्या है, एनोनिमिटी है, प्राइवेसी है, कंसेंट है, डेटा ओनरशिप, सिक्योरिटी, बायस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पांसिबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड बेनिफिसेंस. तो ये हमारे इन टाइम्स टू कम बड़े इश्यूज हैं. आप एनी वन ऑफ अस but every one of us is going to use AI, so we need to know how to use it judiciously. And this was the article which I told you, got 200 citations. And thank you very much for patiently. Wonderful talk by Dr. Rehan. Artificial intelligence is not the future, it is today. So we all need to understand and learn how to use it ethically and to our advantage. Rawalpindi Medical University is doing amazing work in undergraduate medical education. Dr. Ifra Saeed and Dr. Sidra Ahmed, they look after the early undergraduate medical education of first year and second year. So let's hear about the innovations that they have done. And maybe those people who are coming from other universities can take some tips on how they can solve problems at their end. Dr. Sidra Ahmed. Slide change immediately. Dr. Salman, slide change. Thank you so much. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra Hamid. I am working as Assistant Director Medical Education at Rawalpindi Medical University.
जो हम आपको इनोवेशंस बताएंगे और करिकुलम का ओवरव्यू देंगे, यहाँ पर इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं कि थोड़ी सी मैं नर्वस भी हूँ कि वो शायद आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक हों। लेकिन एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इन वन क्लास वी आर हैविंग अराउंड 370 स्टूडेंट्स, और अपग्रेड भी होते रहते हैं, इसी तरह से माइग्रेशंस होती रहती हैं। और जब हमने करिकुलम पे काम करना शुरू किया था, देयर वाज नॉट अ सिंगल मेडिकल एजुकेशनिस्ट इन रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इट वाज देन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। और हमने बड़ी मेहनत से, यानी लोग पहले पढ़ते हैं और फिर काम करते हैं, और हमने पहले, आप समझें, हमारे पास एक्सपीरियंस था मेडिकल एजुकेशन में काम करने का। उसके बाद हमने वीसी साहब की लीडरशिप में साथ साथ हम पढ़ते थे और साथ साथ हम करिकुलम डेवलप करते थे, पायलटिंग करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये उसका एक ओवरव्यू है जो वक्त के साथ 2015 में ये जर्नी स्टार्ट हुई। उस वक्त हमने काम करना शुरू किया। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को जो है हम लोग बता सकें कि हमने इस पे कितनी मेहनत की है, और 2015 से लेके 2023 तक अब हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमने शुरू कहाँ से किया था। सो दिस इज़ आवर मोटो, ट्रुथ, विजडम एंड सर्विस। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द मिशन स्टेटमेंट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने जब कहा कि रिसर्च ओरिएंटेड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, तो आपको इस चीज़ पे हैरत होगी कि इस साल हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने बड़े बेसिक लेवल पे रिसर्च की है, लेकिन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से इस साल हमारी इंडिपेंडेंट रिसर्चेज इंशाल्लाह पब्लिश होंगी। ठीक है, देन विजन एंड वैल्यूज़, highly recognized and accredited center of excellence in medical education using evidence-based training techniques for development of highly competent health professionals who are lifelong experiential learners and socially accountable। अभी हम ये चीज़ें सिर्फ आप लोग भी जो राविलियन बैठे हुए हैं हमने लिखी हुई हैं, लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जब हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स तो बन गए हैं, लेकिन जहाँ पर एआई की बात आई है, ट्रूथफुलनेस की बात आई है, ऑनेस्टी की बात आई है, प्रोफेशनलिज्म की बात आई है, आज हमने ये सारा सेशन लीडरशिप पे किया है, तो हमें इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि हम अपनी किताबों में ये चीज़ें लिखते तो हैं, लेकिन ट्रू सेंस में ना तो वो हम में इनकलकेट हुई हैं और ना हम अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम कहते हैं ट्रूथफुलनेस, जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो मैं आउटर वर्ल्ड की बात नहीं करूँगी, पाकिस्तान की बात करूँगी, अपनी यूनिवर्सिटी और इर्द गिर्द जो हमारे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करूँगी कि हमें अभी इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रूथफुलनेस एंड प्रोफेशनलिज्म, दीज आर सम वैल्यूज़ विच आर स्टिल लैकिंग इन अस, और इन पर हमें पढ़ाने से बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है। These are the milestones of curriculum development at RMU। स्टार्ट हमने किया था दिसंबर 2015 में। जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एग्जाम हुआ, दैट वाज कंडक्टेड बाय यूएचएस, इट वाज इन 2018। और आरएमयू ने एज इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपना फर्स्ट प्रोफेशनल ब्लॉक वाइज इंटीग्रेटेड एग्जाम लिया, दैट वाज इन ईयर 2020। दिस इज द सेम फ्लो शीट जो हर जगह फॉलो हो रही है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, डिस्कस होते हैं, देन वी कन्वर्ट देम इनटू लर्निंग सेशंस, देन इन टाइम टेबल्स, फिर सारा जो करिकुलम बन जाता है, अल्टीमेटली इट गोज इनटू द कोर करिकुलम कमेटी, देन अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी करिकुलम कमेटी, एंड देन थ्रू हायर बॉडीज। जब हमने करिकुलम डेवलप करना शुरू किया था, उस वक्त हमें इन स्टैंडर्ड्स का इतना आइडिया ऑनेस्टली नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हमने जो है वो चीज़ें जो डेवलप की हैं, हमने अब पूरी अपनी एफर्ट हम कर रहे हैं कि हम वेफमी स्टैंडर्ड्स के साथ अपने सारे के सारे करिकुलम को अलाइन करें। और जब हम अलाइन हमने करना शुरू किया तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने अलाइनमेंट जो है वो अचीव की हुई थी। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर करिकुलम ऑफ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। दीज आर द स्टडी गाइड्स, दीज आर अवेलेबल एट RMU वेबसाइट। पहली जो इनोवेशन हमने की है, हमारे लिए स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस रन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वेन्यूज एज वेल एज ऑफ द फैकल्टी।
तो हमने उसमें भी इनोवेशंस किए। और जो लेक्चर है, हमारा जो मेन डिलीवरी का मीडियम है दैट इज लेक्चर, क्योंकि इसके लिए हमें कम ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और इसके लिए हमारे पास लेक्चर हॉल्स मौजूद हैं। तो हमने इनोवेशन क्या की, हमने इनोवेशन ये की है कि हमने अपने लेक्चर को ही इंटीग्रेटेड कर दिया है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बेसिक साइंसेस के लेक्चर तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ले लेते थे, क्लिनिकल साइंसेस के लेक्चर्स वो छोड़ देते थे, उसके बावजूद वो 75% ऑफ अटेंडेंस अपनी अचीव कर लेते थे। सो इन ईच लेक्चर द कोर सब्जेक्ट्स आर 60%, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जैसे फर्स्ट ईयर अगर आप कंसिडर करें तो एनाटमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के साथ 20%, वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसे अगर एनाटमी का लेक्चर है तो सर्जरी के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी, फार्माकोलॉजी के साथ होगी, दैट इज 8%। और लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे कोर्सेज हैं जैसे रिसर्च है, बायोएथिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैमिली मेडिसिन, इसके साथ भी हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लेक्चर को। और इस लेक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है, अब हम ये कर रहे हैं कि सारी जो मॉड्यूल टीम है जिसमें आपके बेसिक साइंटिस्ट भी हैं और आपके क्लिनिकल टीचर्स भी हैं, वो इकट्ठे बैठकर डिसाइड करें कि स्टूडेंट को कौन सी बेसिक नॉलेज देनी है और उसके साथ उसके कौन सी क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऐसी बतानी है जिनकी प्रेवलेंस भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, उनसे रिलेटेड बायोएथिक्स कौन सी ऐसी है जो कि हमने स्टूडेंट को टीच करनी है, और फिर उसी को ही हम एग्ज़ाम में जो है पूछें। इसी तरह से जो हमारे स्मॉल ग्रुप्स थे, मैंने आपको बताया यहाँ पे मेडिकल एजुकेशनिस्ट इतने नहीं थे, तो हमारे लिए शुरू में टीचर्स को ट्रेन करना डिफिकल्ट था। तो अब हम इस लेवल पर आ गए हैं। शुरू में ऐसा होता था जिस बैच को अच्छे टीचर मिल गए उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती थी, जिनको मतलब ऐसे टीचर्स मिल गए जो इतनी एफर्ट नहीं करते थे, इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं करते थे, उनके लिए डिफिकल्टी थी। उस इश्यू को हमने ऐसे रिजॉल्व किए कि हमने स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस का टीचिंग कंटेंट जो है उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिए, और हमने एसजीडी कंडक्ट करने का जो मेथड है उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिए, ताकि इससे इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टीचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फैसिलिटेटर में, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है रियलिस्टिकली अगर हम सोचें, क्योंकि सर को बोलने दो। हाँ शॉर्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। इन एडिशन टू एसजीडीज, एसडीएल, सीबीएल, पीबीएल, स्किल लैब सेशंस, ये सारे हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट जो इनोवेशन है दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ टीचिंग कंटेंट। हमने जो जिनकी डिफिकल्टी इंडेक्स ज़्यादा है टॉपिक्स की, वो हमने डिसाइड कर लिए कि वो टॉपिक्स प्रोफेसर्स टीच करेंगे। सिमिलरली जो मॉडरेट हैं वो एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स टीच करते हैं, और जो सिंपल टॉपिक्स हैं वो फिर हम सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स को कहते हैं कि वो उनको टीच करें। These are the longitudinal courses जो हम रन कर रहे हैं across the 5 years, और इनके थ्रू जो हम values inculcate कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, these are teamwork, ethics, professionalism, communication skills and leadership. These are other vertical courses जो हम रन कर रहे हैं, biomedical ethics, family medicine and artificial intelligence. हमने फर्स्ट ईयर से ही लॉग बुक जो है इम्प्लीमेंट कर दी है, और अब हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि हमने इसको डिजिटल कैसे करना है, ठीक है। दिस इज प्रोफेसर उमर्स क्लिनिकली ओरिएंटेड इंटीग्रेशन मॉडल फॉर असेसमेंट। पहले ये चल रहा था कि आप बेसिक नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज पढ़ा रहे थे, लेकिन टेस्ट हम स्टूडेंट से क्लिनिकल नॉलेज का नहीं ले रहे थे फर्स्ट ईयर से, हम उनसे बेसिक नॉलेज ही पूछ रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, आपको पता है जितनी लर्निंग है दैट इज असेसमेंट ड्रिवन। तो अब हम जो है, अब हमारी जो असेसमेंट है दैट इज ऑल्सो क्लिनिकली ओरिएंटेड। दीज आर स्पेशल फीचर्स ऑफ RMU असेसमेंट मॉडल। 75% अटेंडेंस से हम 90% अटेंडेंस के क्राइटेरिया पे चले गए हैं। इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी हम 30% वेटेज 2017 से ही दे रहे हैं, और अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कैसे 50% पे लेके जाएं। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स which are being conducted in each module and block. ये जो हम कर रहे हैं, this is very important, ये हम अपने सारे ब्लॉक्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं
कि किन एरियाज में हमारे स्टूडेंट्स वीक हैं, और उन वीक एरियाज को हम टेस्ट कर रहे हैं प्री एनुअल असेसमेंट में, जिसे हम स्टैंड अप भी कहते हैं ट्रेडिशनल टर्म्स में। और इसमें हम परसेंटाइल निकालते हैं कि हमारी क्लास के कितने % स्टूडेंट्स किस ब्लॉक में या किस एरिया में वीक हैं। ठीक है, दिस इज स्वॉट एनालिसिस ऑफ बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर करिकुलम। मेजर स्ट्रेंथ, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है यूएचएस ने इस साल इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर करिकुलम लॉन्च किए। हम 2017 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारी हो चुकी है। अपॉर्चुनिटीज़, हम क्योंकि बहुत पहले से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है, तो अब हम उसको मज़ीद रिफाइन कर रहे हैं बाय डेवलपिंग क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल, एंड हम हर चीज़ की क्वालिटी उसके साथ साथ इम्प्रूव करते जा रहे हैं। वीकनेस यही है, एक तो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, सेकेंडली बीइंग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारे पास कम है, और थ्रेट आपको पता है कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर करिकुलम को बहुत क्लोजली जो है वो मैनेज करना पड़ता है। दिस इज बेसिकली फ्यूचर होराइजन 7 स्टार डॉक्टर मॉडल जो पीएमडीसी बता रहे हैं, और हम हर जो इसकी वैल्यू है उस पर काम कर रहे हैं ताकि ये सिर्फ किताब में ही ना हो, हमारे स्टूडेंट में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट भी हों। और करिकुलम थ्रू आउट द ईयर हमारा जो है वो हम उसको रिव्यू करते रहते हैं इन द लाइट ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट, स्टूडेंट फीडबैक एंड टीचर फीडबैक्स, और इन्हीं बेसिकली इन्हीं की लाइट में हम अपने करिकुलम को रिवाइज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ladies and gentlemen, there is no change without a leader. And what you're seeing here today and we've witnessed over the past 3 days is because the leadership of one man, and that is Professor Muhammad Umar Sitara Imtiaz. A big hand of applause. He has, I personally know, and this comes straight from the heart, that he's extremely, extremely busy looking after not only the university, but also 3 allied hospitals. And I'm very thankful to you that you spared time and come to our session to talk about the integrated teaching and assessment model here at Rawalpindi Medical University, which is something very, very unique and very, very new that Sir has created. And it has brought a revolution in how we teach and how we assess. So I introduce Professor Muhammad Umar to talk about teaching and assessment. नहीं आप करेंगे। नामदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorables, delegates, medical educationists, our own faculty member and participants, it is indeed an honor and pleasure to be the part of this educational symposia. Let me confess first that I'm not a trained medical educationist. I'm a just simple teacher. So there is a difference between teaching and being the educationist. लेकिन इन लाइटर नोट मैं 20 साल से लोगों को देख रहा हूँ, नो डाउट इन इट के इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन मैंने जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुई फ्रॉम द क्लिनिकल person to the full-time looking administration and governance of the teaching. I'm not saying that I'm an educationist, but certainly this is my duty. It is a part of my duty to be govern the medical education institution as a vice chancellor. So फिर मैंने इसको जरा देखना और पढ़ना शुरू किया हाल में दिया था समय।
तो उसको पढ़ना शुरू किया। सो मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, ना मुझे पढ़ना चाहिए था, बिकॉज दिस समबडी एल्स सब्जेक्ट। तो इन्हें लाइटर नोट मैंने कहता हूँ ये लैपटॉप वाले डॉक्टर है, ठीक है। तो इन्हें जो इनके जो हमारे मसाइल हैं इनका कोई पता नहीं है। तो ये लैपटॉप क्योंकि इसरान ने हर वक्त पकड़ा होता है, तो आपको नहीं मैं कह रहा, तो ये हर वक्त मैंने कहा ये कौन डॉक्टर जा रहा है, लैपटॉप वाला डॉक्टर, मैंने कहता क्योंकि इतनी इनकी वर्कशॉपें मैंने सुनी है, और वही टर्मिनोलॉजी जो है वो मुझे इतनी मुश्किल से फिर समझ आती है। फिर वो कभी पी कहते हैं, के कहते हैं, कभी तो एस कहते हैं, फिर उसको चेंज कर देते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा चले इसको समझ ही लेते हैं। तो जितनी मुझे समझ थी उतना मैंने समझा, तो मैंने इनको क्वेश्चन पूछता था। फिर मैडम डीन भी इधर है, डॉक्टर इफ्रा भी इधर है, तो मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं 360 लोगों को ये इम्प्लाई किस तरह करें। लेकिन ये सारी चीजें जो है जी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मैं सर उसकी एक मिसाल देता हूँ। तो मुझे इन्होंने 4 साल तो धोखे में ही रखा, सच्ची बात है। फिर मेरा इन पे ट्रस्ट पूरा ब्रीच हो गया, पहले ही मुझे शक था। तो मैं धोखे से निकला है, मैंने कहा नहीं ये इनका काम जो है ना, वो कहते हैं ना, चर्चिल ने कहा था कि, किसने कहा था वो, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ने कहा कि उन्हीं ने कहा दिस गवर्निंग कैन नॉट बी लेफ्ट ओवर टू द जर्नल्स। जंग तो आप पे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है वो उस पर नहीं छोड़ सकते। सो मुझे वो बड़ी हैरानी हुई। तो कहते जी मैंने, अच्छा मैंने गौर, जब मैं पढ़ता था मुझे कोई समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा जी ये जो घंटा है ना, ये तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं किसने कहा आपको? जी पीएमडीसी ने कहा। पीएमडीसी का डॉक्यूमेंट लाए, अच्छा जी वो हो गया। उसके बाद जी ये 360 बंदे जो है ये बैठेगा उसके लिए। जी सर हमें तो बड़ा मसला पड़ गया। अच्छा वो मसला सॉल्व किया, मैंने कहा चले बेसमेंट में बिठाएं। फिर कहते जी वो, मैंने कहा आपने पढ़ाना क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में? नहीं हमने डिस्कशन करनी है। तो मैंने कहा ऑडिटोरियम इतना बड़ा है, 1200 सीट का ऑडिटोरियम है, 4 कोनों में उसकी आगे माइक पे बोल रहा होता है, तो नहीं सर उससे बड़ी वादें हो जाएंगी। तो मैंने कहा ये पीछे हर वक्त कंप्लेंट होती है कि आगे स्पीकर बोल रहा होता है, पिछले वालों को कोई समझ नहीं आ रही होती, पूछो क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपने जो छोटा सा सेशन करना है उसकी आवाज जरूर चले जाएगी उधर। बड़ी मुश्किल से मैंने बैठ बैठ के इनको बोल बोल के दिखाया कि 4 कोनों में नहीं आवाज जा रही। तो आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसमें कर लें। 2 साल बाद पता चला कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का करिकुलम डिटेल से नहीं बना हुआ। तो मैंने, हम बच्चे को कह देते हैं, माजरत देहन आपको नहीं कह रहा, वो मैंने और कई कॉलेजेस कि रेडियल नर्व उसे कहा था पढ़ ले। तो मैंने कहा रेडियल नर्व पढ़ने में मॉड्यूलर का क्या कसूर आ गया? और बंदों रेडियल तो हमें पहले भी लोग कहते थे पढ़ाओ, फिर सब स्टेज लेते थे, तो ये कौन सा काम है? देखो उसका भी फिर करिकुलम बनाए कि रेडियल नर्व पढ़नी किस तरह, ठीक है, कितने घंटे पढ़नी है। वो मुझे रेडियल नर्व, हमारे दोस्त थे उसको आती नहीं थी समझ, 5 साल में नहीं समझ आई उसको। तो आप कितने आवर देंगे, कितने टाइम देंगे? फिर मैंने कहा इस एसडीएल को सुपरवाइज कौन कर रहा है? देखो तो पहले भी हमें लोग कहते थे जाके पढ़ो, हमको नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो ये अब एसडीएल आपने नाम लिखा दिया उसका, तो हम भी नहीं पढ़ते थे, तो अब हम आखिरी महीने पढ़ना शुरू कर देते थे। तो आपने ये क्या मैकेनिज्म प्लेस किया है? तो मैं कह जी एसडीएल जो है, एक दिन मैडम से मेरा झगड़ा हो गया। तो मैं कहते कि इतने टीचर कहाँ, मैंने कहा इधर इनको म्यूजियम में बिठाएं, इंश्योर करें फिर पढ़े, हॉस्टल में तो नहीं जाके पढ़ते ना हम। तो घंटा भी आपने रखा हुआ है, कहते इतने टीचर नहीं है। मैंने कहा मैडम आप अपना लैपटॉप लेके अपना काम उधर करना शुरू कर दें, तो इंश्योर करे कि ये पढ़ने। तो फिर कहते हो सेस किस तरह करें? मैं सामने वाली स्क्रीन पे सेस करे कि घंटा पड़ा है, आप बताएं कितनी देर में सेस होना है। तो एमसीक्यूज बना के रखे, ताकि जब वो म्यूजियम से निकले तो उन्हें पता हो कि एसडीएल पढ़ा गया है, और एसडीएल इंश्योर हो गया, एसडीएल असेस हो गया, एसडीएल हैज बिकम द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। बट हाउ कैन आई ट्रस्ट अनसुपरवाइज एसडीएल के? वो तो हो गया, वो तो सदियों से हमें पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो ये कौन सा आप नया काम ले आए? ये मैं आपको लाइटर नोट बता रहा हूँ जो आपको लोगों ने नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं आपको, कहते हैं ना सच्ची बात लोग नहीं बताते, तो को आपके दोस्त होते हैं जो आपको सही बात बताते। तो मैंने कहा जी अच्छा ये सुपरवाइज्ड जो है। फिर जी एक साल मेरा इस पे जाया हुआ कि उनका जी सर अगर आप ये काम करेंगे, जितने आपने स्प्रेड करते जा रहे हैं कंटेंट, और उनको फिर फॉर्मेटिव असेस करना, उसको समेटिव असेस करना, उनके नॉलेज को करना, उनके स्किल को करना, उनका पता नहीं क्या चीज चेक करना, पी उनका साइकोमोटर करना, उनका एटीट्यूड करना। तो ये तो बड़ा डेंजरस हो गया। एक दिन मेरे पास आ गए एक प्रोफेसर साहब, वो इधर नहीं अब, तो कहती कि इसको फौरन कम करे सर, अदरवाइज टीचिंग का टाइम बहुत कम मिलेगा। मैंने कहा ये भी सही है, पढ़ाना ज्यादा जरूरी है कि असेस करना जरूरी है? मैंने कहा पढ़ाना ही ज्यादा जरूरी है। साल उसमें लग गया, पता चला कि क्या असेसमेंट हो रही है कि जी 5-5 एमसीक्यू छोड़ के, तो उसकी असेसमेंट पे इतने घंटे लग रहे हैं। सारे साल में कितने घंटे लगे? पता जी कुछ 40-50-100 घंटे जो है ना एमसीक्यूज लेते हुए हो गए। तो मैंने कहा ये कौन सा काम है, एमसीक्यूज में कौन टेस्ट करता है? कहते मशीन करती है।
तो मैंने कहा एमसीक्यू दिन को 12 बजे लेना कहीं लिखा हुआ है, आप रात को 10 बजे ले लें, तो आपके 100 घंटे बच जाएंगे साल के, वो पढ़ाने पे लगाए। बड़ी मुश्किल से लोगों को मैंने कन्विंस किया कि ये एमसीक्यूज जो है ये रात को लिए जाएं, ताकि आपकी बिजली भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो आप रात को ले लें ये असेसमेंट, और असेसमेंट से भी आपके टीचिंग आवर से तो निकल गए ना, वो रात को तो आप नहीं पढ़ा रहे ना जाके। अच्छा, वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस हो गए लोग, बट इट इज ए रियल स्टोरी। जब वो हुआ पहला, मैंने खैर एलएमएस बनवा लिया, तो बन गया, एग्जीक्यूट हुआ, तो मेरे पास एक आ गई टीचर, तो आ गए मसलन, तो वो सारा, चूंकि हमारी टीचर फीमेल है तो मुझे वही, तो उन्होंने कहा सर बड़ी आरएमयू में करप्शन फैल गई है। मैंने कहा कि क्या करप्शन हुई है? मैंने कहा कोई इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए होंगे मेरे किसी स्टाफ ने। वो कहते नहीं नहीं सर, ये एकेडमिक करप्शन हो गई है। मैंने कहा वो क्या हुई है? कहते जी जब आपने ये शुरू किया रात को 10 बजे मिर्जा साहब, तो वो ये हॉस्टल है ना साथ ही, तो यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ नेट वेट फास्ट था ये वो। तो वहाँ क्या हुआ है कि लोगों ने, मैं कमरे में, हमने देखा है कि वो किताबें खुल गई हैं, 5-5 10-10 बच्चे एक कमरे में बैठे हुए एमसीक्यूज हल कर रहे हैं। तो वो तो बड़ा, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी इन एमसीक्यूज की, कि ये पढ़ पढ़ के हल हो रहे हैं, तो और डिस्कशन ही हो रही है उधर, तो इसको फौरन बंद करें, इसको वापस इधर लाएं, ताकि हमारे एमसीक्यूज ले डेमोस्ट्रेटर, उनके इन्विजिलेटर हों, 20-25 डेमोस्ट्रेटर इन्विजिलेटर है, वो नकल तो नहीं कर रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे। अच्छा, आई हैव ए बिग लाफ, मुझे ऐसे ही, मुझे पता था क्या होगा, तो मैंने कहा कि सर क्या हुआ है? कहते करप्शन, इस तरह तो बड़ी रेप्यूट खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा ये बच्चे क्या कर रहे थे वैसे, आपने खुद गए हैं? कहते मैं खुद की जाती तौर पे जाके विटनेस किया है, मैं कभी पहले हॉस्टल में गए। कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या लेने गए थे? मैं यही देखने गया था कि सिस्टम ठीक है या फेल करना चाहिए इसको। अच्छा जी, पता चला। तो मैंने कहा ये जो आप एमसीक्यू पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों को? कहते हैं हम भी कहते हैं दोबारा पढ़े जाके, ताकि आपका इम्तिहान हो रहा है। तो मैं क्या, अगर बच्चे इकट्ठा पढ़ना शुरू हो गए हैं, बच्चे उस पढ़े हुए को डिस्कस करना शुरू हो गए और डिस्कस करके एमसीक्यूज का जवाब लिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मेरे वाला तो एजेंडा पूरा हो गया। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है। अब वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कोई जरूरी तो नहीं कि सुबह के 10 बजे हो, रात को भी वो कर सकते हैं। और अगर 4 बच्चे डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज को, तो यही तो हमें चाहिए कि बच्चा पढ़े और डिस्कस करे। खुद ही कहते हैं कि उसकी डिस्कशन होनी चाहिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, उसकी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो मैं कि इस इंटरवेंशन ने, दे हैड मेड, हॉस्टल में तो हम लड़ते झगड़ते रहते थे या गप्पे मारते थे, तो मैंने कहा इस हॉस्टल का माहौल बदल जाए। कहते हैं कंप्लीट साइलेंस है, सिर्फ बच्चे अंदर घुस गए हैं और नकलें चल रही हैं, किताबें खुली हुई हैं। तो मैंने कहा सुनिए, एमसीक्यूज का जवाब अगर पढ़ के लिख लिया है तो फिर भी लर्निंग तो हो गई। खुद कहते हैं लर्निंग मीन यू लर्न, आइदर यू लर्न बाय माय लेक्चर विजुअलाइजेशन, आइदर यू लर्न फ्रॉम द बुक, आइदर यू लर्न फ्रॉम द डिस्कशन। तो लर्निंग एमसीक्यूज उसने सुन के ठीक कर लिया, कुछ कर लिया तो उसने लर्न कर लिया। इसमें क्या करप्शन फैली है? नहीं नहीं सर, ये वो, खैर 2-3 दिन डिस्कशन चलती रही। फाइनली माय आर्गुमेंट प्रिवेल कि यू कैन हैव ओपन बुक सिस्टम, इज दिस ए फॉर्मेटिव असेसमेंट? कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मैं कि समेटिव भी हो तो आई विल गो फॉर दैट, because you don't need the faculty, you don't need the space, you don't need the time, or why you are mistrusting your own student? मैं क्या आरएमयू के स्टूडेंट की इखलाकियात जिसने मेरे साथ काम की इतनी गिरी हुई है कि वो 100% झूठ बोल रहा है, तो फिर मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? फिर तो आप उस्ताद किस चीज के हैं? मैं कहता हूँ किताबें साथ पढ़ ही रही है ना। करेक्टर तो ये है कि वो कहती है मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, अब मैंने किताब क्यों खोलनी है? वो हमारे डर से किताब नहीं खोलता। तो दिस इज फेलियर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, ये फेलियर ऑफ एनी टीचर। फिर क्या अखलाकियात था? फिर वो जो पी क्या करते हैं, पी नहीं, ए 1 A2 3, कि ए मतलब जिसका बहुत अच्छा अखलाक है, एटीट्यूड है, A2 जिसका बहुत बुरा एटीट्यूड है। मैंने कहा ये तो फिर क्या आपने कैटेगरी भी खुद ही बना ली है? तो ये अखलाकियात कहाँ से फिर आपने पढ़ाई है? तो ये मॉडल होगा टू टेस्ट, दिस विल बी द ऑस्पी फॉर द अखलाक, दिस विल बी एटीट्यूड का। कैसे आप एथिक्स चेक करेंगे कि आपके बच्चे नकल नहीं करते? दिस विल बी वन टूल ऑफ टेस्टिंग द एथिक्स। देखिए अगर वो नहीं करते आपके और साथ वाले कॉलेज के कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी स्ट्रांग एथिक्स आपने पढ़ाई हुई है और आप मॉडल एथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा आप बच्चों को ये समझाएं कि ये गलत बात है, और उनको पढ़ाएंगे, तो अगर वो नहीं करते तो ये आपका एथिकल मॉडल है। तो हमने फिर ऑस्पी एथिक का बनाया, इसको ऑस्पी डिक्लेयर किया। और बाकी मैं क्या, अगर लर्निंग स्ट्रेटजी है तो वो सारे डिस्कस करके करे, वो कमरों में इकट्ठे बैठ के करे। आप कहते हैं कि वो किताब खोल के छुप के पढ़ाओ, ये कौन सी आजकल टीचिंग रह गई? तो डिजिटल लाइब्रेरी किस वक्त देखेगा वो? और फिर रेफरेंस जो है वो कब का देगा?
तो मैंने कहा अच्छा होगा, कोई कोई बता रहा है मैंने ये किताब पढ़ी है, इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, उसके बाद एमसीक्यूज हल हो रहे हैं, बच्चा पास हो गया, बच्चे ने वो नॉलेज सीख लिया। आप कहते हैं नहीं इधर ही आगे हमारे सामने 25 डेमोन्स्ट्रेटरों के इन्विजिलेशन में सीखे। तो दिस टुक अस 2 months, द पीपल गेट कन्विंस्ड। तो वो तो सारा हमारा काम गया। ठीक है, जब हमने नॉलेज को कैटेगराइज किया तो उन्होंने कहा जी ये नॉलेज जो है, सपोज किसी सब्जेक्ट का, फॉर दैट मैटर आप हेपेटाइटिस को ले लें कि 30% नॉलेज है, कोई 40% स्किल है, बाकी इस तरह। मैं 30% जो नॉलेज है उसमें से मुझे ये फैसला करके बताएं कि कितना नॉलेज जो है उस एसडीएल में है। पता चला जी कि 25% एसडीएल में है। वो जो इन्होंने क्लास में पढ़ाना है वो या उधर पढ़ाना है वो बच्चे को समझ आती है। जब वो समझ आती है, हम उनकी बेसलाइन डिफाइन कर ली कि जब ये पढ़ के आया है तो इसने क्या सीखा है, और जब हमने पढ़ाया तो क्या सीखा। पता चला जब हमने पढ़ाया तो ज्यादा कंफ्यूज किया। उसकी वजह क्या है कि मेरा सब्जेक्ट पे कंट्रोल ही नहीं है। जो कल का डेटा डिजिटल उसने लाइब्रेरी से, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बिजी आदमी हूँ, मेरे पास तो रेफरेंस ही 20। तो बच्चा तो पढ़ के आया डिजिटल लाइब्रेरी से जो उसको फ्री है, उसके आंसर बेहतर थे। एक और केस स्टडी बनी कि हम ठीक नहीं पढ़ा रहे, वो खुद ठीक पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने 25% कट कर दिया टाइम जो है, हमारी बिजली भी बची, हमारे रिसोर्सेज भी बचे, हमारी फैकल्टी भी जो थी चले स्वेटर स्वेटर बुनती रहे, लेकिन फ्री तो है ना, कम अज कम मेंटली तो फ्री है ना। अब वो प्रिंसिपल साहब के डर से लेक्चर ले रहे हैं, आगे पता चलता है असेसमेंट में कि उस लेक्चर का फायदा ही कोई नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा घर से पढ़ के आए, वो ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ के आए, वो ज्यादा पास हुए। इस तरह के सर हमने, जब मुझे आना शुरू हुआ मैंने कहा ये सारे प्रोग्राम को जो है री इन्वेंट करने की जरूरत है। अच्छा, फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है उसमें भी नॉलेज के टीयर है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आगे तो आप उसकी छोड़े। यानी कि इसमें से कितना नॉलेज जो है वो 100% श्योर करना चाहिए, और कितना नॉलेज जो है वो 50% करना चाहिए, उसकी कैटेगराइजेशन करें। जब उसकी कैटेगराइजेशन की तो पता चला कि इसमें से 30% नॉलेज जो है वो उसको 100% आना चाहिए। तो फिर कौन से एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो किलिंग एमसीक्यूज होंगे कि ये नहीं आता तो किताब खोल ले, हमें क्या लगे उसने किताब से। अगर उसने वो 30% जो एमसीक्यूज 100% को आने चाहिए थे, उन्होंने क्या है जी रेडियल नर्व के स्ट्रक्चर बना दें। मैं माजरत में डॉक्टर मैडम आपका नहीं बात कर रहा, तो हेपेटाइटिस की चले मेरा फील्ड है, तो वो उसने कुछ बना दिया। तो मैंने कहा आपको पता है कि कौन सा नॉलेज हेपेटाइटिस का इसको जरूर आना चाहिए। नहीं ये तो नहीं, हम हेपेटाइटिस से पढ़ाया सर, कुछ पैथोलॉजी टेस्ट ले लिए, कोई डायग्नोस्टिक का डाल दिया, कोई ट्रीटमेंट में डाल दिया एमसीक्यूज। तो मैंने कहा फिर आपने वो कौन सा इंश्योर किया है कि ये कंपोनेंट ही मस्ट नो अबाउट द हेपेटाइटिस, ही नोज के हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, ये आपने कैसे इंश्योर किया। और इसकी प्रिवेंशन 100% है अगर उसको वैक्सीन लगे। उसको सेल स्वोलन का पता है, उसको प्लानी ट्रांसमिशन का पता है, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कराना कितना जरूरी है और इससे कितना उसका सेफ्टी हो जाएगी और उसकी फैमिली की हो जाएगी। तो हेपेटाइटिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज और हैज टू गो हेपेटाइटिस एंड ट्रीट इट। नहीं नहीं, इसको तो प्रिवेंशन 100% है। तो मैंने बच्चे को क्या मैसेज किया, जो आपने एमसीक्यू बनाई हो तो सारे ही वो है कि डायबिटीज में फैटी लिवर को के हेपेटाइटिस कैसे करता है, गाल ब्लैडर डिजीज से हेपेटाइटिस भी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या तो हो जाता है। तो वो तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तो उसको ही फिर हमने कैटेगराइजेशन की। डॉक्टर सम्या यानी बैठी हुई है, बाकी लोग भी बैठे हुए, ये हमारी डिस्कशन। तो ये फिर कहते थे कि वो आलम शेर मलिक साहब को पूछते हैं। मैंने कहा अभी तो आप मुझे ही पूछे ना, अभी तो इसको चलने दें कि बात समझ आ रही है। तो ये सर हमने इसको मॉडिफिकेशन की। फिर मैंने कहा जी आप ये बताएं कि एमसीक्यूज कितने बनने, एक रेडियल नर्व है कल्नल नर्व है, दोनों के एक जैसे ही बनने हैं या दोनों का रूट जरा टेढ़ा मेढ़ा है। कहते जी वो नहीं टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा जी नहीं एक जैसे ही, नर्व तो एक जैसी होती हैं। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आपने क्या देखा है इंजरीज जो होती हैं। वो कहते जी इंजरी तो रेडियल नर्व की होती है। तो मैंने कहा रेडियल नर्व की इंजरी क्यों होती है, कि वो इंजेक्शन लगता है, वो डेल्टा सुपरफिशियल होती है। तो मैंने कहा फिर दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी कैसे होगी। नहीं उससे अर्ब पैरालिसिस होता है। मैं कितने अर्ब देखे हैं आज तक, मैंने नहीं देखा, मैंने एक देखा है। ठीक है, 70 साल की उम्र तक रेडियल हर तीसरे बंदे ने देखा होगा जी, गाँव से टीका लगाया ये हो गया। तो मैं कि दोनों के एमसीक्यूज एक कैसे कैसे बन सकते हैं। मैं कि इसकी क्लिनिकल इंटीग्रेशन किसकी ज्यादा होनी चाहिए, रेडियल नर्व की, मीडियन नर्व की, या ये जो अल्नर नर्व है। मेरे ख्याल से तो क्लिनिकल इंटीग्रेशन ज्यादा जरूरत है उसकी। और ये वन टाइम करना है आपने सर, ये हर रोज नहीं रेडियल नर्व ने अपना रास्ता बदल देना। ठीक है ना, ये यू टर्न नहीं ले सकती रेडियल नर्व। ठीक है ना, यू टर्न से समझ गए ना। तो वो है इसको एक ही पार्टी में रहना है। तो लेकिन आप वन टाइम मेडिकल एजुकेशनिस्ट ये डिसाइड कर देंगे कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंडेक्स ये है, ये इसकी क्लिनिकल इंटीग्रेशन इतने परसेंट होनी है, इसकी इतने परसेंट होनी है। ये रोज लैपटॉप पकड़ा हुआ तो कहते हैं कहाँ जा रहे हो वर्कशॉप कराने, कहाँ जा रहे हो सीपीएसपी जा रहे हो,
वो भाई मेरे इधर भी ठहर जा। तो वो पता चला जी लैपटॉप में आज उसने बदल दिया है। तो मैंने कहा फिर ये बनाए। उसका सर हमने इस डेप्थ पे एनालिसिस किया और उसकी कितने अच्छा फिर मैंने कहा कि जी सवाल कितने, सर वो हम 10 MCQ पे 2 ना पूछने एथिक्स के। मैं कहा 2 क्यों एथिक्स के पूछने? आपने कंटेंट कौन सा पढ़ाया एथिक्स का? आपने कोर कितना पढ़ाया? आपने हॉरिजॉन्टल कितना पढ़ाया? आपने वर्टिकल कितना पढ़ाया? आपने लॉन्गिट्यूडनल कितना पढ़ाया? स्पाइरल कितना पढ़ाया? एमसीक्यूज किस फार्मूले से बन रहे हैं कोई पता नहीं। स्लाइडें किस फार्मूले से बन रही हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ हेपेटाइटिस 200 स्लाइडें बना के लेकर, ठीक है, आप आ गए आप 150 ले आए। वो तो डेमोस्ट्रेटर को दिया उसने 300 ले ली हैं कापियां। वही हेपेटाइटिस के लिए 100 स्लाइडें को यूज कर रहा है, को 150 कर रहा है। वही हेपेटाइटिस के अगर एलओसी आपने, इसने तंग करा हमारा अरसलान ने, एलओसी एलओसी सर नहीं पता चल रहा, आपको समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा सॉरी ये माय फ्रेंड, तो इसलिए इसका नाम ले रहा हूँ। सो एलओसी में पागल हो गया। पहले मैं एलओसी की किताबें छपवा दी इसके कहने पे। बाद में मुझे पता चला कि एलओसी बने किस तरह। तो मैंने कहा क्या निकालना है इससे? कहता जी इससे ये निकालना है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी हेपेटाइटिस से कि ये एसेंशियल कंपोनेंट। फिर मैंने कहा चेक इनमें 50% पास होना 50। देखिए सर आप असेसमेंट किस चीज की कर रहे हैं? आप कॉम्पिटेंसी या नॉलेज की कर रहे हैं? आपने नॉलेज की कैटेगराइजेशन की नहीं हुई। अच्छा फिर पढ़ाने पे आ गए। अब जो जब हमने कहा जी लेक्चर भी स्टैंडर्डाइज कर, अब हमने सर अगर आपने रेडियल नर्व पे लेक्चर देना है तो हमें एक्सपर्ट ने बताया हुआ कि इसका कोर इतना है, इसका वर्टिकल इतना है, इसका हॉरिजॉन्टल इतना है, इसका फलाना है, इसका एथिक्स। मैंने कहा मुझे बताया कि रेडियल नर्व की एथिक्स किस तरह चेक करनी। ये तो नहीं सर हर चीज की एथिक्स होगी ना। बिग टो की लहदा एथिक्स होगी, आंख की लहदा एथिक्स होगी, फिर उनको मिला के एक एथिक्स होगी, फिर उसके साइकोमोटर स्किल की एथिक्स होगी, फिर उसके सोशल स्किल की एथिक्स होगी। एथिक्स एक चीज तो नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा जिसकी एथिक्स निकालें। फिर एथिक्स की ऑस्पिस्टेशन कैसे बनना है? आप सर एक बंदा मेरे पास आया, मुझे गाइड कीजिए। आज मैंने बड़े लोगों से पूछा, उधर मुझे मिल गए थे। तो मैंने कहा जी एक बच्चा है मेरे पास फर्स्ट ईयर में आता है, एथिक्स एथिक्स हो रहा है, मॉडल मॉड्यूल बन गए हैं। तो मैं क्या टूल है जिससे मुझे पता चले ऑब्जेक्टिवली इसके एथिक्स बेहतर हो गए? पहले तो एथिक को स्ट्रक्चर करे ना। आपकी एथिक की डेफिनेशन और मेरी और फलाने की और, फिर जिस क्लास से पढ़ के आया सोशल क्लास की एथिक्स और, ठीक है ना। हमारे बच्चों को जो है ना 100 रुपया नीचे पड़ा वो उठाते भी नहीं है, ठीक है। और बच्चे 5 रुपये भी पड़े हो तो बताता नहीं कि सर आपकी जेब से गिरे, बिकॉज सोशल नीड्स आर डिफरेंट, ठीक है। सो ये सारी कैसे आपने सोचा सर? फिर इसका क्या पर्सपेक्टिव आपने लिया है? क्या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं? कुरान शरीफ में इसके बारे में क्या है? हदीस के इसके बारे में क्या है? इसकी सुन्नत में शरीयत में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई? तो इसकी इंटीग्रेशन कहाँ गई? मुझे ये समझाएं कि यू सेव वन लाइफ यू सेव द मैन काइंड, ये मैं कहाँ फिट करूँ एथिक्स में? और ये कैसे उसको पता चले कि जी मैं जो है ना अगर मुझे रात को 2 बजे भी कॉल की है तो मैंने बस को पेन कमरे से नहीं लिखना, because somebody can lose life, it may not be peptic ulcer, it may be myocardial infarction। ये कैसे ट्रांसलेट होगी? या मॉडलिंग होगी कि आपको वो मेरे साथ काम होते थे सर तो बिल्कुल जी आके लिखते थे और देखते थे कि, लेकिन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव थिंग, दिस इज पर्सन डिपेंडेंट। उस पे फिर हमने चले गए। तो मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, जो मुझे डिफिकल्टीज हुई तो उस पर फिर हमने डिजाइन किया कि कैसे है। अब सर हमारा वो जरा दिखाइएगा। फिर सर आपको मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं, मुझे नहीं पता, मुझे बाकी नहीं पता, मैंने चूंकि मेरा इतना रेहान प्रोफेसर रेहान साहब जैसा एकदम नहीं, और मैं शायद इतना फिरा भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे तो ERCP आती है। तो मैंने कहा ये जो इल्म है इसका फायदा क्या है? एक फिर फायदा मुझे नौकरी मिलेगी, ये इसी तरह के सवाल पूछते हैं वर्कशॉप में। अच्छा हमने कभी सोचा नहीं होता, ये पढ़ के आया होता है तो सवाल हमें आते नहीं होते, ऐसे लगता है कि बिल्कुल जाहिल प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठ के आगे और एक अक्लमंद आदमी आ गया है जिसने लैपटॉप खोला हुआ है और हार्डन हार्डन, एक तो मैंने हार्डन बंद कराया उसे। और यार ये आप भी हार्डन बंद, मैंने कहा नहीं नहीं सर मैंने हार्डन ना कहे, बड़ी बेइज्जती। मैं कहा क्या हार्डन पैदा ही इस तरह हो गया था कि छोटा छोटा बन के बड़ा था? तो ये हमें, मैं इसे लोकल हार्डन कहता हूँ। मैंने कहा इसी तरह ही बना होगा, वो ये नहीं होता कि नबी सिर्फ होते हैं जिनको खास ब्रेन दिया जाता है, जिनको खास सपोर्ट किया जाता है। अल्लाह ताला कहता है ये मेरी विजन से देखते हैं। बाकी हार्डन शार्डन हमारी तरह ही 400 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, 2 लोब होते हैं साइडों पे। तो वो सिर्फ समझाया है, मान गया। तो अब सर ये बताएं कि वाई वी एजुकेट ए पर्सन। तो हमारा ये जो कंसेंसस हुआ कि वी एजुकेट टू क्रिएट विजडम, नॉट टू टेक डिग्री। वो उसकी बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वो तो उसने जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्या सर जिनको आप MBBS डिग्रियां दे गए हैं वो बन गए हैं, उनको जॉब मिल गई है? तो फिर डिग्री का क्या मतलब हुआ? तो डिग्री का एक मेजर मतलब यह है कि उस एरिया में
या वो वाइज हो गया, वो मेडिसिन है, और इन पर्सन भी वाइज हो गया, इन ह्यूमन बीइंग उसमें विजडम आ गई है। ये बताएं कि वो कहते हैं ना एक शेर रामा इकबाल का कि ये मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? ठीक, अगर यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों से नॉलेज आता होता तो ये बेशुमार बादशाह जिन्होंने शेरशाह सूरी ने काबुल से लेके दिल्ली तक, वो किसके पास डिग्री थी? उसको किस हार्डन ने पढ़ाया था भाई साहब? इसका मतलब है इसकी कोई डेप्थ है। और जब बंदा एजुकेट हो जाए तो ही शुड बी ए वाइज पर्सन। ही कैन मेक वाइज मेडिकल डिसीजन, ही कैन मेक अदरवाइज सोशल डिसीजन, ही कैन मेक ए वाइज एथिकल डिसीजन, ही कैन एजुकेट पीपल, ही शुड बी द स्कॉलर। मेरे 5 मिनट और है, मुझे दूसरे लोग आना शुरू हो गए ना इसलिए। अच्छा वो हो गया। एनीवे तो सर हमने कहा कि नो, वी टीच पीपल टू लर्न विजडम। इसलिए आरएमयू का ग्रेजुएट जो है वो ये नहीं लिखेगा कि ही इज एक्सीलेंट इन मेडिकेशन, उसने विजडम है, ही इज ए वाइज मैन नाउ, ही इज गिवन डिग्री दैट ही इज ए वाइज पर्सन इन द कम्युनिटी। और जो 7 स्टार डॉक्टर, ही शुड बी लीडर। तो आपकी डिग्री तो ये पता ही नहीं लीडर कैसे बनेगा। लीडर तो वही है ना सर, कि जो कम्युनिटी के अंदर जिसकी लोग बात सुनते होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मेरे सच पे आपको कोई इतबार है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप सादक करमीन है। उस वक्त को वही आई हुई थी, तो ही वॉज ए मॉडल। तो डॉक्टर लीडर कैसे बनेगा? ऐसे उसको आप दे ही नहीं रहे डिग्री पे लिख के कि हाँ जी ये रोल मॉडल है कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को डेप्थ में हमने सोचा तो विजडम। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च आपको चाहिए कि उसके लिए एक अदारा चाहिए जो रिसर्च क्रिएट करे और डिसेमिनेट करे। व्हाई? बिकॉज दिस क्रिएट एविडेंस टू डू समथिंग। कि ह्यूमन माइंड जो है वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो अपना अल्लाह ताला कराची में आता है कि आप अपना मैं आपको एक छोटे से कार्टिक एरिया बताता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, आप अपना बाजू नहीं हिला सकते, तो फिर द विजडम विल वेयर ही इज ए रिसर्चर। तो रिसर्च का मतलब है टू फाइंड ट्रूथ, एंड रिसर्च नेवर एंडिंग। इसलिए कि हर जब तहजीब आएगी तो वो कहेंगे अच्छा ये आगे एक चांद पे उतरने का क्या तरीका है। 200 साल पहले चले जाते तो चांद का तो वो किससे सुनाते थे अम्मा। तो ये रिसर्च का मतलब फाइंडिंग ट्रूथ। अब फाइंडिंग ट्रूथ वो नहीं, एक मॉरल ट्रूथ भी आ गया। हम मॉरल ट्रूथ रिसर्च में ऐड ही नहीं करते। जब मैंने बताता ही नहीं हूं कि ये मॉरल ट्रूथ जो है वो भी एक रिसर्च सब्जेक्ट है, तो वो फिर कैसे? वो कहता नहीं रिसर्च का मतलब ये है कि 100 औरतों में से 50 मर्द और उनकी उम्र ये और पेपर लिख लो। तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जब नहीं लाएंगे तो पर्सनैलिटी कैसे बिल्डअप होगी? एक अच्छा इंसान कैसे आप माशरे में छोड़ेंगे? और मेडिकल ओरिएंटेड कैसा छोड़ेंगे? और उसमें भी जो एलिंग ह्यूमैनिटी को देखता हो, उसको ऐसे है कि आपकी रिसर्च, आपकी विजडम किसके लिए यूज होनी चाहिए? टू ट्रीट ए पर्सन हैविंग डिजीज, एलिंग पर्सन। तो क्या उसको उसका ट्रीटमेंट कहना चाहिए या उसको सर्विस कहनी चाहिए? हमारा ख्याल है कि उसको खिदमत कहना चाहिए। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम उस वक्त सुनते थे जब मैंने मैट्रिक टॉप किया था कि आपने डॉक्टर क्यों बनना है? मैंने लोगों की खिदमत करनी है, मैंने सुना सुनाया था। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन केयरिंग ए पेशेंट और ट्रीटिंग ए पेशेंट एंड डूइंग सर्विस टू द दैट पेशेंट। फिर आप उसकी एथिक्स का भी ख्याल रखेंगे, उसके अटेंडेंट को भी करेंगे, ये भी देखेंगे इसने टॉयलेट किस तरह जाना है, इसके साथ अटेंडेंट की एज क्या है, ये रात को गिर तो नहीं जाएगा, इसको दर्द तो नहीं हो रही। तो फिर आप इसकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी जो आप इतना महंगा दवाई लिख के जा चुके हैं? उसके पास तो गाय बेच के भी वो टीका नहीं आता, ये कैसे सिखाएंगे आप? हार्डन कहाँ बता गया ये? ठीक है, कि गाय बेचने को रोकने का क्या तरीका है पाकिस्तान में? वो आपको पहले किसी ने ये बताया होगा। तो ये जो सारी चीज थी, तो हमने कहा कि ना सर हमें उस इल्म की जरूरत है, ना हमें उस रिसर्च की जरूरत है जो इल्म नाफिया नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट होली बुक से। इवन आई एम नॉट, मैं हदीस की मिसाल नहीं दे रहा। कराची में आता है कि वो इल्म जो इल्म नाफिया नहीं है, जिससे इनको फायदा नहीं पहुंच रहा, पेशेंट केयर, तो इसका मतलब है उस रिसर्च को बंद कर देना चाहिए, उस इल्म को बंद कर देना चाहिए। हर वो इल्म, खा वो हार्डन के रूल पे हो, नॉन हार्डन के रूल पे हो, यूनिवर्सिटी के बाहर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, अमेरिका में अगर वो इंसानियत को फायदा दे रहा है, ईलिंग इंसानियत, तो इसका मतलब है उसका फायदा। तो ये यूनिवर्सिटियों ने मॉडल बनाना। इसलिए मैं इनको बताता हूँ कि हर टाइम आप ये मुझे बताएं कि इसका क्या ऑडिट है आपके टाइम। एनीवे तो उसको सर, ये फिर हमने सर एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया इस पे। नेक्स्ट। अब ये मुझे मुझे नहीं पता, आप यूनिवर्सिटी मुझे बताएं कि 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है किसी यूनिवर्सिटी के पास? 19 मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारा डॉक्यूमेंट है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, इसको चलाते जाए। एक ये मॉडल है। देखिए ये पे बैक मिशन है कि आपने प्रोफेसर रिहान साहब, आप किस साल में सर आपने की थी ग्रेजुएशन? आपकी कितनी फीस थी याद है आपको? हाँ, मैं बना था 2500 में।
ठीक है, चॉइस साहब बने थे मेरे हाले मेरे से जरा थे, ये बने होंगे 3000 में। अब 3000 जो है उस वक्त आपको पता है डॉक्टर कितने में बनता था? 1 लाख में। तो इसका मतलब 97,000 आपने टैक्स पेयर के उन्होंने डाले, मेरे में भी उन्होंने डाले 98,000। और आज डॉक्टर कितने में बनते हैं आपको पता है? ट्यूशन फीस है 18,000 मिर्जा साहब, 96,000 में। और वैसे हमारे खर्चा आता है 55 लाख। तो 54 लाख और 2,000 4,000 रुपया टैक्स पेयर। वो कौन है टैक्स पेयर? वो माली, वो छल्ली वाला, सफाई वाला, वही टैक्स देता है ना सिगरेट पे, और उससे हमारी फी की कंपनसेशन हो रही है। ठीक है, हार्डन मॉडल ये कहता है कि उसके बाद आप वो 2,000 भी आज तक वापस नहीं। कैन पीपल रेज हैंड जिन्होंने अपने 3,000 वापस किए हैं? मैंने नहीं किए। तो चाहे जाए कि मैं लाख वापस करता, अमेरिका की जैसी सिविलाइजेशन, कनेडियन में आपको लोन लेना पड़ता है और लोन वापस करना पड़ता है। और हम सारे पढ़ के इधर से फिर हम कहते हैं कि जी अच्छा मैंने वर्कशॉप करानी है, मेरे साहब कहते हैं कि जरा देखूं बिजनेस क्लास में कितने पैसे लगेंगे, दूसरे क्लास में। तो अगर उस वक्त टैक्स पेयर हमारी फीस ना देते, मैं तो ना पढ़ सकता। अगर उस वक्त लाख रुपया देना पड़ता, चॉइस होते पढ़ जाते, क्योंकि इनके G9 में 9 प्लाजे हैं। ठीक है, गांव में उनके 90 मरबे हैं, मैं तो ना पढ़ सकता कम से कम। तो देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी who became vice chancellor in this institution because of this subsidized medical education which was paid by the cleaners, by sweepers, by छली वाला। वो तो मैंने आज तक वापस नहीं किए। और आ जाता हूँ लैपटॉप पर, किसी चले भाग गया वो, लैपटॉप पकड़ा हुआ है। मैं हार्डन का आपको ना बताऊं सर के एटीट्यूड क्या होते हैं, आपको ये ना बताऊं कि एथिक्स किस तरह पढ़ानी है। मैंने कहा भाई पैसा तो वापस करना जो टैक्स पेयर का खाया हुआ है, और अगर इंटरेस्ट है वापस करें तो फिर आपका ख्याल है कि यूनिवर्सिटी से बेहतर ना हो जाए? आज भी 13,000 स्टूडेंट हमने प्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ने, और अगर वो अपने पैसे जो है लाख लाख रुपया ही वापस कर दें तो आपका ख्याल है कि यूनिवर्सिटी की शक्ल ना बदल जाए? जो मैं हर रोज, अमेरिका का जो है नॉन मुस्लिम वो तो अपने पैसे वापस करता है, और मेरे जैसा बंदा जिस मतलब है 5 वक्त मस्जिद में तस्बीह मेरे पास है और मैं अपने 5,000 वापस नहीं करता। फिर भी मैं कहता हूँ मैं एथिक पढ़ाने आया हूँ। किसी को पता चले मुझे कान से पकड़ के अमेरिका में बाहर निकाल दे, तू तो इस कौम का लोन देना है, तू कहाँ एथिक पढ़ाने आ गया? तो सर इट इज ए फेलियर ऑफ द सिस्टम बिकॉज वी ओनली रीड बुक्स, वी नेवर एनालाइज। जिस तरह क्रांशीफ को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपका नहीं सर कर रहा, डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने किस तरह समझा इसको, या मतलब मुझे भी खुद ऐसे ही समझ आई। तो ये सर फिर हमने आगे चले, ये सर मैंने आपको एथिक्स और उसकी बात कर रहा हूँ। अब सर ये जो सारा है मुझे उसकी लॉजिस्टिक चाहिए कि ये 350 स्टूडेंट की कैसे है। अच्छा वो कोई नहीं बताता, इसलिए डीजी खान कहता है जी हम नहीं कर सकते, हम कहते हैं जी गा लेते। 53 में से किसी ने नहीं किया। क्या ये इतना डराते हैं? एसटीएल सर, एसटीएल में देखे ना उस कोने पे आपकी आवाज जाएगी, वो भाई जिस तरह मैं चीख रहा हूँ जाएगी। मैंने अमेरिका में देखा लोगों बीवी को बात नहीं चल रही होती, मियाँ साथ बैठा होता है कि किससे फोन पे बात कर रही है, बोलने की तमीज ही नहीं है, बोलने की एथिक ही नहीं सुनाई। ठीक है, अच्छा वीसी के लिए तो कोई हद ही नहीं ना, कि ना टाइम की परवाह ना बोलने के स्टैंड, वो तो जिसको मर्जी, नहीं इसने तो डांटना होता है सर, वीसी है। क्या एथिक्स सिखा रहे हैं सर? मैं सही कह रहा हूँ ना? साथ वाले को आवाज आ रही होती है सर, बीवी को नहीं पता चल रहा होता मियाँ के से। 4 बड़े कमरे में वहां पे 5 बंदों का एसडीएल नहीं हो सकता, यहाँ नहीं, एक हमें लेक्चर थिएटर चाहिए, 10 करोड़ का लेक्चर थिएटर बनता है। मैंने कहा चले उधर पढ़े, मैं भी इधर बैठता हूँ, किधर आवाज आती है भला। जब लेक्चर हो रहा था किसी को पूछो भी तुमने जवाब दो, कहता सर मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही थी। वो आपने सुना हो ना जोक, जो टेलीफोन पे किसी को कह रहा था बंदा कि यार मेरे पैसे वापस कर, पैसे वापस कर। उसको तो बीच में ऑपरेटर था, तो वो बंदा कहता मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ऑपरेटर बोला यार आवाज आ रही है बड़ी क्लियरली, तो उसका जवाब दे, कहता तुझे आवाज आ रही है? कहता आ रही है। कहते तू दे दे फिर तू मैं क्या, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। ये एसडीएल वाले को नहीं बड़ी परेशानी हो रही है, कहती आवाज। तो हमने डॉक्टर साहब उधर शुरू करा दी। अच्छा उसका एक ऊपर भी फ्लोर है, लतीफा एडिटर, मैं क्या उधर ले ले। 5 क्लासरूम हमने क्रिएट किए उस तरह। अच्छा म्यूजियम इतना बड़ा है, ठीक है, उनको पूछो भी कोने में पता चलो तो 4 बच्चे बैठे चुप करके बातें कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता टीचर को। मैं कि इतना तो साइलेंट एसडीएल हो रहा है जब उन्होंने पढ़ना नहीं होता। तो इधर तो ये सर हमने फिर इसी तरह ही बहरहाल किया। ये सर फिर हमने वो आप देख रहे हैं कि पीछे चले को मैं चीज छोड़ तो नहीं दी। अब आप नहीं सर मेरे जरा दे। अब सर ये अपने अभी रिसेंटली कराया, आपका कंटेंट जो है उसका साइकिल नहीं बना हुआ। देखिए सर अगर आप कहते हैं कि 60% पढ़ाना है
तो 60% आपने फिर आगे स्प्लिट करना है कि ये नॉलेज बेस कितना है, स्किल बेस कितना है, लैब में कितना जाना है। अगर आपने नॉलेज का फैसला कर लिया कि 60% पढ़ाना है, फिर उसके पढ़ाने के लिए कितनी स्लाइडें चाहिए, किसी ने 40, किसी ने 50, तो मुझे एनाटॉमी वाले बताएं, मुझे फिजियोलॉजी वाले पढ़ाएं जी इतना। स्लाइडें क्या, टाइम चाहिए ना, खुद आप कहते हैं जी इतने आवर्स पूरे करने, इतने आवर में। फिर आपने किसने फैसला किया कि इतने आवर में ये नॉलेज आ जाएगा? वो पीएमडीसी ने किया, वो तो क्लर्क ने किया। रेडियल नर्व को आने के लिए कितने आवर चाहिए और पैनकियास को आने के कितने आवर चाहिए, दोनों के डिफरेंट है। तो वो किसने फैसला, पीएमडीसी ने किया, वो जी 4 बंदों ने कर लिया। मैं उन पे बिलीव करता हूँ कि उन्होंने एक्सपर्ट से पूछा होगा। लेकिन चैलेंजिंग जो हमारे लिए था, फिर सर हमने ये सारा डिवीजन की। अब इनके पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी, जी ये आप 60% पढ़ाना है, इंटीग्रेशन पढ़ानी है। पीएमडीसी वाले पहुंच गए, जी आपके पास तो टीचर ही काम है, इंटीग्रेशन किसने पढ़ानी है जी? फिजियोलॉजी वाले के साथ एनाटॉमी वाला नहीं पढ़ानी है इंटीग्रेशन, बायोकेमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ानी है, मेडिसिन की भी पढ़ानी है, सर्जरी की भी पढ़ानी है। एचएस के लिए हमारे आजी साहब आते हैं, उन्होंने पढ़ानी है। आजी साहब भी क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो तो वो पढ़ानी है। तो मैंने कहा ये मुझे बताएं कि ये 30% टीचर तो वैसे ही निकल गए, ठीक है। अगर आप ये टीचरों की बात कर रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल से ही पढ़ाने आना है, तो मैं किस चीज की डेमोस्ट्रेटर हूँ 25-25 की तनख्वाह दे रहा हूँ? वाई आई नीड 2 प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी? पीएमडी से देखा 3 प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। 3 प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी क्यों? जब आपने 30% एनाटॉमी पढ़ानी नहीं है, 20% आपने एसडीएल में निकाल दी, 30% आपने कहा इंटीग्रेशन हो गई है। और फिर हमने कहा जी चले प्रोफेसर आप, मैडम तो खैर नहीं आई, तो कौन है पीछे, और ये आ गया। सही है, देखे जरा जूनियर बंदे की मिसाल ने कि सर बड़ा रश पड़ गया पढ़ाने का। मैंने कहा तेरा जितना नॉलेज है ये बता के, पढ़ा लिखा आदमी है, तूने भी रेडियल नर्व पढ़ानी है, उसने भी मीडियन नर्व, तो फिर फर्क क्या है? तो तू पहले फैसला करके अपर लिम में तूने क्या पढ़ाना है, तेरे लेवल का पढ़ाना है। ये अभी बता रही थी ना कैटेगराइजेशन, हमने कैटेगराइजेशन की कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे, ये एसोसिएट पढ़ाएगा, क्योंकि वो वही पढ़ा सकता है, उसका जो सर्टन नहीं कर सकता कि दूसरा बंदा के वाकई उसको समझ आ गया। और जो रबश तो नहीं कहने लगा, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है वो दूसरा पढ़ा दे, उसको स्ट्रक्चर करके दे दे। फिर सर हमने ये किया। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है। फिर हमने फीडबैक से भी लिया, खैर नेक्स्ट, ये करिकुलम है हमारे। नेक्स्ट, ये तो आपको बता, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा ये फिर करिकुलम, ये आपको हमने, अच्छा करिकुलम में बताता था तो किसी को समझ नहीं, मैंने कहा जी इसका क्यूआर कोड लगाएं, जो मर्जी यूनिवर्सिटी इसको कर। नेक्स्ट, वो आगे ईएनटी वाले चले जी। तो ये फिर हमने कहा जी बाकी लोगों को ही बुला लें। अच्छा क्योंकि कोई पढ़ के नहीं आता, सबने कहा ये करिकुलम ठीक है। वो पढ़ के आए, इतनी इतनी किताबें मोटी, तो वो 4 बंदों ने पढ़ा हुआ, हार्डन साहब ने। अब हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारी आपने मेरे ख्याल बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अब सिर्फ ये लेक्चर किस तरह डिलीवर करना है। तो ये भी सर अगर 10 स्लाइड का लेक्चर है, इसका मतलब है कि 100 स्लाइड नहीं आप बना सकते। 20 का है तो 20 बनेगी, और उसमें से फिर कोर अगर 10 है तो 6 बनेगी, 5 बन सकती हैं, 7 बन सकती हैं, लेकिन रहेंगी इतनी। अगर हॉरिजेंटल में 10 में से होना है तो इसका मतलब है कि 1.5 स्लाइड उसकी बनेगी, ठीक है। और वर्टिकल अगर 7% होना है तो 1 स्लाइड उसकी बनेगी। अब ये बननी किस तरह? उन्हें जी कोट कहाँ से होना है? अब सोर्स क्या है? सोर्स क्या है जी कि उसकी वो डेफिनेशन, नॉट एट ऑल, यू हैव टू कोट विद द लास्ट लेटेस्ट जर्नल। तो फिजियोलॉजी की कोटिंग आएगी जो पिछले हफ्ते जर्नल छपे, वो नहीं है तो वेब लिंक आएगा। डिजिटल लाइब्रेरी हमने फ्री कर दी, जर्नल फ्री कर दिए। तो वो कहती एनाटॉमी का जर्नल तो आपने खोला ही नहीं है। मैं कहता नो रेफरेंस शुड बी द लेटेस्ट नाइट जिस दिन ये लेक्चर बना है। तो एक दफा बना लेंगे तो फिर तो आपने वही चेंज करना है। तो ये सर उसकी फिर हमने कंटेंट भी बनाए, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजी के अलावा उसको भी डिवाइड किया इन अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट, जो आप चाहते, कॉम्पिटेंसी, कंटेंट आर द विच लीड टू द कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट, लास्ट बस बता दें। नेक्स्ट, ये देखिए आपने बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ फिर असेसमेंट। उन्होंने बैठा एक दफा, डॉक्टर साइमा यहाँ से उठ के चली गई, मैंने वो इत्तेफाक से पेपरों की क्वालिटी इंश्योरेंस खुद की, तो पता चला जो 40% है डायबिटीज से सवाल पूछ रही है। मैंने कहा ये क्या हुआ है? उसको कोई उसको अलाइनमेंट ही नहीं है। मैंने कहा डायबिटीज से तो आपका एक एमसीक्यूज बनता है, क्योंकि आपने पढ़ाया ही उतनी देर के लिए, न्यू कम पढ़ाया गया। तो मैंने कम पढ़ाया गया तो फिर कंटेंट पे वापस जाएं, उसको बढ़ाए और किसी के कम करें, तभी प्रैक्टिकली। फिर हमने ये सर ये किया, और इसके ऊपर फिर जो
किताब लिखी, ये फॉर्मेट, इसमें से असेसमेंट में ही फॉर्मेटिव कितनी होनी है, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट कितनी होनी है, उसमें से फर्दर स्प्लिट किया है कि उसकी अटेंडेंस का कितने मार्क्स हैं, उसके फलां चीज के कितने मार्क्स हैं, आगे रिसर्च का चलते जाए। अब बच्चे को जो है जी रिसर्च पढ़ा दिए कई लोगों ने कहा, तो सर ये कैसे पता चले? ये तो ऐसे ही बच्चा जब तक डिलीवर नहीं होगा, ठीक है, और डिलीवरी क्या रिसर्च की? पब्लिकेशन जी, बच्चा कैसे पब्लिश करे जी? मतलब 10,000 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें पूछो जी कि भाई प्रेगनेंसी सब कुछ हो गई, एंटीनेटल केयर हो रही है, बच्चे को लिखना नहीं आता, तो लिखे कहाँ? वो कहते हैं जी प्रोफेसर रेहान साहब जो है उन वाले आर्टिकल में तो मैं नहीं लिख सकता उनके जर्नल में, तो वो कैसे लिखेगा? बिकॉज इन 75 ईयर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर नो स्टूडेंट जर्नल। पहला स्टूडेंट जर्नल जो है 2014 में हमने शुरू किया उनके लेवल का। उसको ये नहीं सिखाना कि इम्पैक्ट, उसको आर्टिकल अब्स्ट्रैक्ट, उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, डिस्कशन वो सिखानी है, और वो तब पता चलेगी जब वो लिख के उसको कोई वैल्यूएट करेगा। तो पहला जर्नल जो है शुरू किया पिंडी ने, पहला रेजिडेंट जर्नल शुरू किया। ये वो जी एफसीपीएस का लेते, रिसर्च नहीं आती, तो वो क्या सीपीएसपी के जर्नल में पब्लिश करेंगे, जिसमें मैं भी नहीं कर सकता। तो पता नहीं कहाँ से सर ये चल पड़ा रवाज, बट एनीवे वो सर लास्ट दिखा दे। एनीवे बिकॉज मैं बहुत टाइम तो सर ये मैंने ये नहीं लेक्चर दिया, ना ही मैं दे सकता हूँ, ना ही मैं एक्सपर्ट के मेडिकल एजुकेशन में क्या हो रहा है, बट फिर हमने सबने बैठ के हार्डन को थोड़ा सा पीछे कर दिया, और हमने देखा कि 350 लोगों के इल्म को विजडम में कैसे चेंज करना है, और उसका स्ट्रक्चरल बेस और ऑब्जेक्टिविटी कैसे लानी है, जो एक्रीडेट बॉडी भी मान जाए। अब मेरी अखलाकियात की तरीके को तो ऐड करनी पड़ेगी, उसको सीख किया, इस तरह हमने रिसर्च के मॉडल को किया, और फिर हमने लास्टली कि इसको एथिकल मॉडल जो है या पेशेंट केयर में कैसे उसको ट्रांसलेट किया। तो ये डिटेल से तो डॉक्टर साहब बता चुकी होंगी। तो दीज आर द डिफिकल्टी आई फेस। आई नीड ओनली वन टू कमेंट कि मेरे सवाल का किसी पर जवाब होता कि आई बिकम द फास्ट लर्नर। जी प्रोफेसर रेहान साहब, ये जो मैंने चैलेंजेस बताए हैं इनका कोई सोल्यूशन आप देते हैं हमें? अच्छा, फिर हमने लोगों को कहा कि वो कहते हैं कि जी कि मैंने कहा अच्छा अच्छा जी ये बताएं कि आप पार्किंसन में पढ़ा दिया तो कैसे को जी उसके डिजीज के सवाल पूछ रही है, मैं कि उसको टाइमर कहते जी वाकई 350 का कैसे मैडम वो आसपी दें। फिर हमने वीडियो असिस्टेंट निकाला कि हर वो डिजीज, हर वो साइन उसको दिखाया जा सकता है। आप 250 की आसपी 15 मिनट में खत्म हो जाती है। अगर आपने 5 मिनट सेशन बनाया है, 3 पार्किंसन पे एक बनाया है, एक पे बैठे, तो वो ट्रेमर की सारी आपको उस पर दिखा देगा। ठीक है, चलिए करके नहीं दिखा सकते 350 पे, तो वीडियो असिस्टेंट को फिर हमने कहा कि कितना वीडियो असिस्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए पढ़ाने में और असेस करने में, ऐसे ही है नहीं। तो ये नहीं है कि आप फिर अच्छा, एक मुझे पता चला एक प्रोफेसर 4th ईयर के उन्होंने सारे वीडियो असिस्टेंट कर दिए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान हो गया, जो फिजिकली बनाते थे इंटरेक्टिव बनाते थे वो खत्म। वो भी मुझे को 6 महीने बाद पता चला। तो काफी सारे काम जो है अब हमने सारी चीजें स्ट्रक्चर कर दी हैं सर, क्यूआर कोड पे डाल दी हैं। अब अगर किसी ने हमारा देखना है सिस्टम के ये गलत है तो वो क्यूआर कोड और लिंक पे देख सकता है। एक्रीडेशन बॉडी आती है उसके मुताबिक कर देते हैं। क्यूई हमने स्टेब्लिश कर दिया है। अगर सर आपका इम्तिहान हो रहा है 20 स्टेशन है तो वो मेरे से प्रूव होंगे एथिकल। उसके बाद एक स्टेशन मैंने भी चेक करना है फिजिकली बैठ के। वाइस चांसलर हैज टू in some exam sit on one station wherever he like and see what are the question asked, what are the answer given by the students, because जो मेरे experience है वो किसी बंदे का नहीं हो सकता in medical education, because I know the outcome over 40 years. Nobody know the outcome of, अगर quality assurance आप उन्हीं demonstrator से करा रहे हैं, हार्डन मिनी हार्डन से करा रहे हैं, तो इसके पास तो लैपटॉप बना हुआ है, ठीक है। वो आप मेरे जैसा बंदा ही उसको देख के कर सकता है कि हाँ ये जो है ये वो बात नहीं हो रही जो एक बच्चे में होनी चाहिए, जिसने कम्युनिटी में टू सेव वन लाइफ मीन सेविंग ह्यूमन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Ladies and gentlemen, with this we come to the end of the session. Today you have witnessed a paradigm. आपने experience की बात भी सुनी, आपने नई बातें भी सुनी, और we have all become very very wise through all these perspectives, and I hope कि आपने कुछ achieve किया हो और you'll take home something to work on and develop. So I'd request Vice Chancellor Saab to come for a group photograph. We'll have a group photograph, and apologies to the ENT. We've already taken a lot of time, so just a group photograph and we'll